Hello everyone, my name is Chetan Kumawat and I am physics faculty at Infinity Learn by Sri Chaitanya. So today we are here to discuss the paper of 27th June, Shift-2, basically the evening session, Shift-2. So let's just start from the question number 1. The question is from unit and dimension, that is the SI unit of physical quantity is Pascal and second. Okay, Pascal into second. So you are having a quantity which is having the unit as Pascal second, you need to find the dimension. So Pascal is basically the unit of Pascal is the unit of pressure, right? So you can write it as a force upon area, and time is second is basically the time, right? So the dimension of force is m1 L1 t minus 2, dimension of area is L2, and the time dimension is T1. So you can just simplify it, m1 L1 minus 2 is minus 1 and T is minus 1. So this is the dimension of the Pascal into second, which is option A. Okay, so it is a quite easy question from the unit and dimension chapter. This is the question from, I would say, basic math and approximation. So the distance of the sun from the earth, is given to you. So let's say this is the sun and there is earth. Okay, if you are standing there and you want to see the diameter of like the sun, so it will be something like that. So this is the diameter of sun and this distance is given to you, and this distance is not so small, this is very high, that is 1.5 into 10 to the power 11 meter. One more thing is given to you, the angular diameter, basically the angle which is given here is 200 S. So it was something new for the student. What do you mean by S? It's basically the angle unit also second, है ना? In second we represent something like by double bars, right? So this is the angular diameter. So let's just first convert into the SI unit of angle, that is radian. So 2000 second is given, so first convert into the minute. So 1 second is 1 by 60 minute, then you will convert into as in like the degrees, so it will be 1 by 60. I mean 1 minute is equal to 1 by 60 degree is there, right? So this whole answer is in degree, but the SI unit of angle is radian. So we will multiply this whole term with 1 by pi by 180. So you can see here these 30 will get cancelled. This is thrice, and 1 by 18 is 324 into pi. This much radian angle is subtended by this diameter at the point on the earth. Now what you have to calculate is this d only. Now you can say this distance is too high, right? So by the approximation you can say if this angle is theta, so that theta will be d by this distance, 1.5 into 10 to the power 11. And now the value of theta you have calculated, that is pi upon 324. So 0.5 basically 1 by 2, and this will be 108. Pi by 108, pi is 3.14 divided by 2 into 108 into 10 to the power 11. So नीचे 216 आ रहा है, तो ऊपर समथिंग 300 होना चाहिए, उसके लिए आपको 2 पावर उधर से लेनी पड़ेगी. So it will be something divided by 314,216 into 10 to the power 9, and the answer should be in SI unit because we have taken all the units in all the values in SI units, right? So your answer should be 1 point something into 10 to the power 9. So which option is matching with that? That is C option, right? In mains आपको exactly calculate करने की कोई ज़रूरत नहीं है, just focus on the options and get the right one as soon as possible, right? Moving ahead to the third question. So this is the question from, I would say, fluid mechanics, जिसमें विस्कस फोर्स, buoyancy एंड mg मिला मिलू के नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाता है ना, बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो समथिंग इज गिवन टू यू, लाइक यू आर हैविंग अ लेक इन विच अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर, है ना. क्लॉक
is very necessary. Let's say आपको इसने t equal to 0 से you have dropped this ball, so it will happen like it will achieve some velocity when it will reach to this point. Let's say this velocity is v and there is a depth, let's say h of the lake. So after reaching the depth, so what he is saying, it reaches the bottom of the lake 4 seconds after it is dropped. That 4 seconds is measured from here. So if t equal to 0 is here, so this is t equal to 4 seconds. This is t equal to 4 seconds. That is something given to you in the question. One more thing is also given to you, that it is moving inside the water with constant velocity. So this v is not getting changed. Basically the mg and viscous and the buoyant force both are balanced. All the forces are balanced, so net force is 0. That is why velocity is constant. So this ball is dropped from a height of 4.9 meter. I want to know the time, like when it will be at this surface of the lake. So it's very simple, right? Motion under gravity, you can apply Sy is equal to uyt plus half ay into t square. It is dropped, so initial velocity is 0. And what is the displacement in y direction? That is 4.9 equal to acceleration in y direction is 9.8. That is z, acceleration due to gravity. So it will be 1 second. So this ball is reaching at the surface of the lake at 1 second. So now you can tell that what is the time inside the water. 1 to 4 means the time taken by this ball from the surface of the lake to the bottom of the lake is 3 seconds, and it is moving with constant velocity. So distance is equal to speed into time you can do, right? So this is how you have to find the depth of lake. But to find the h, you need v. V means the speed of this ball. So after reaching 4.9 meter, what will be the speed of it? V square is equal to u square plus 2as. You can do, right? Initial velocity is 0. A is 9.8. Displacement is given to you 4.9. So v square will be 9.8 to the whole square. It means v is 9.8 meter per second. So if you got the velocity, definitely you can tell the height is 9.8 into 3, that is 29.4 meter. Which option is there or not? Let's see, the option is B, right? 29.4 meter. So I would say this is quite like question from kinematics, because we didn't use anything from the fluid mechanics in this question, right? So this is the basic question of kinematics, motion under gravity and the constant velocity, uniform motion. Moving ahead, so this is a well-known question of circular motion, right? And mains have asked so many times in the last 2 to 3 years the same question. And last year तो ऐसा question था कि they were having a value of k, m, omega सब कुछ देके आपको final value पूछे थे. That was something calculative. यहाँ पर तो expression ही पूछा है. You don't have to calculate anything. So the question is, you have a basically एक ball है आपके पास या कोई object है, and it is connected to a spring, and the natural length of the spring is L0. That is given to you. ठीक है. Now what is happening? This ball is going to rotate with an angular velocity, or you can say this spring is going to rotate with an angular velocity omega. अब इस ball को omega से घूमना है तो you need a centripetal force towards the center. और यहाँ पर तो कोई centripetal force है ही नहीं इस condition में. Why? Because spring force is k into x, where x is the extension or compression measured from the natural length. ये तो already natural length में तो x 0 है. इसका मतलब पक्का x को स्प्रिंग को खींचना पड़ेगा, है ना? तो स्प्रिंग जैसे ही लेट से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कुछ ना कुछ तो एक्सटेंशन होना ही पड़ेगा स्प्रिंग में, लेट से m. सो इस नेचुरल लेंथ से लेट से x आगे एक्सटेंड हो गई है, तो व्हाट विल बी द स्प्रिंग फोर्स? दैट विल बी k into x only. There will be no role of natural length in this force. So this is the force which will provide it a centripetal acceleration, right? So I can write that towards the center, है ना? If anything is doing a circular motion, so this should be the expression, mass into centripetal acceleration. And what is the force towards the center? That is kx. That is kx, and I can also write it as m omega square into r.
So m omega square. What is r here? R is radius of circle in which this object is rotating, that is not x. The radius is total length, that is L naught plus x. So you can write here L naught plus x, and you need to calculate the value of x. So here the value of x will be m omega square L naught upon k minus m omega square. Now have a look on the options and match if it is matching. So the C option is exactly matching with our answer, so that is right answer. है ना, very famous unique question of circular motion. Moving ahead, this is also like एक टाइम था जब जेई ने पूछा, उसके बाद जेई मेंस ने काफ़ी बार पूछा सेम क्वेश्चन, है ना. So a ball is doing a vertical circular motion and you have given a initial speed of u, and there will be some time when this ball will have vertical velocity, or you can say this string will be horizontal, है ना. So after the rotation of 90 degree, this is gonna happen. So in the whole process, initial to final, you need to find the change in velocity. What you need to find is change in velocity. ठीक है. So देखो, what do you mean by change in velocity? Final minus initial, and I am talking about change in velocity, not speed. So you have to make sure you are taking direction into the consideration. So if you just see here, final velocity is v, but that is in upward direction. It means I can write like this, and final minus initial, I have to do initial is u into I cap, and I need to find the magnitude of this change in speed, right? So the magnitude will be v square plus u square. U is given to me in the question, but I don't know u. I don't know v. So I have to calculate v. How I can calculate? There are only two like unique equation for the vertical circular motion. One is force equation, other is energy conservation. We are not dealing with here any force, so we can apply here energy conservation, that is initial kinetic energy and initial potential energy का sum, or you can say the total mechanical energy has to be conserved, and the reason behind it is there is no non-conservative force. Tension का भी work zero होगा because that is always perpendicular to the displacement. So initial kinetic energy is half mv square, and let's say the reference of potential energy is this one. So potential energy initially I can write 0. Final kinetic energy is half mv square, and final potential energy will be, if potential energy I have assumed here 0, so the final potential energy will be mgl. So I can write v as u square minus 2gl, right? U square minus 2gl. Just put this v value here, you will get 2u square minus 2gl, right? And obviously you can write it like this also, u square minus gl. It means that x has to be 2, right? So the value of x has to be 2, match with the options. Option B is right. Okay. So work power energy से एक simple सा सवाल जो कि vertical circular motion का है. This question, in this question, this is the system of 5 masses given to you, and what you need to calculate is total gravitational potential energy of the system. ऐसा ही question we do in the electrostatics also, right? So here you need to find the total gravitational potential energy, and how to write the interaction potential energy between two masses in gravitation. If there is a distance r, you write like minus z m1 m2 by r, right? ये general formula होता है. So I'll introduce this mass later. What we can do, like we have done so many questions having the square, right? So if I need to calculate what is the interaction energy of these 4 particles only, I need to find for whole, I know, but I am just finding the potential energy due to only this 4 charges. So let's just start. This is a symmetric system, and for the symmetric system I am not counting here, है ना? I will put here, don't worry, I will put in the last, but I am just finding the interaction potential energy or the potential energy of the system of this 4 charges. So this is a symmetric system, and for the symmetric system you can write n by 2 into any one mass, any
1 mass. N by 2 into potential energy of any one mass. N is basically the number of charged particles. They are number of mass particle. They are 4 here, 4 by 2, and due to write any one write the potential energy due to any one mass interaction by the others, right? You can write the potential energy of this one due to this 3. You can write due to this one due to this these 3. They will be same because of symmetry, right? So I am just writing the potential energy of this mass. So it is in interaction with this, this and this. So this distance is d and this is also d. So due to these two, minus g m1 m2 by d, and this is also minus g m1 m2 by d. So this is the interaction potential energy between these two and these two. Now I have to write these two, and this distance will be root 2d. So what I can do, I can write minus gm square upon root 2d. So this is the potential energy of only these 4 particles. Now I have introduced a 5th particle also here. Okay, so no worries. Due to this, due to this, due to this, due to these interactions, if total distance is root 2, so this distance will be half of it, that means d by root 2. Now you can say by the symmetry, like the product of mass is capital M into small m, and the distances are also same. So what you will do, if you have to find the potential energy of system, this expression, that is minus 4 gm square by d and 2 minus 2 root gm square by d, this is the interaction potential energy of all the 4. Now I will write the interaction potential energy of this 5th mass with the all the 4. It means it has to be 4 times of any single one, right? This is the interaction potential energy between these two. You can say minus g m1 by g capital M small m by d by root 2. Now you just multiply it by 4 because we are having 4 masses, so you will get the total system potential energy, है ना? So if you will take like gm by d common minus gm by dh common, so you will see here 4m plus root 2m plus 4 root 2 into capital M. Now try to match with the options. Minus gm by d, 4 plus root 2 into small m is there, that means 4 plus root 2 into small m is there, A option. अब ये जो है, दिस इज लाइक एक बेसिक मेथड है जो एक हर कोई बच्चा ऐसे ही करता है इसको. इफ़ आई कुड हैव बीन इन एग्जाम तो मैं यही सोचता, भाई दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, जी एम क्यूब आ रहा है, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. मैं तो ये सोचता. अब बचे कौन, ये दो. अब मुझे पता है इफ आई विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस मास ड्यू टू दिस 4 मासेस, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी बाई रूट 2 आना है. I mean, ये वाला टर्म आना है और इसका मुझे 4 टाइम्स करना है, तो ये जो कैपिटल एम के साथ है वो 4 रूट 2 आना चाहिए. कौन सा ऑप्शन में दिया है ऐसा? फर्स्ट ऑप्शन में. तो मेरे को एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए टू गेट द राइट आंसर इन मिनिमम टाइम. बट या दिस इज द एक्सप्लेनेशन. मूविंग अहेड, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम KTG kinetic theory of gases. So here you are having a volume and temperature graph. So if there is an ideal gas, so you can apply the ideal gas equation. If you are having the graph between volume and temperature, and this graph is given to you straight line, it means its slope has to be constant. So this is the slope of VT graph, right? And you can see in this diagram that the slope of this P2 wala graph is more than the slope of P1 wala graph. It means NR by P2 is greater than NR by P1. It means P1 has to be greater than P2. Very simple question, right? So A is the right answer. Moving ahead to the next question. ये अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है एंड एकदम थ्योरी से क्वेश्चन आया है प्रॉपर, है ना. बट ये बी और सी आपको आंसर करने के लिए यू मस्ट नो अ लिटिल बिट अबाउट मीन फ्री पाथ. सो पहला स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं. हमें क्या करना है, बेसिकली वी नीड टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स. द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीज होने का मतलब ये है कि मोशन स्टॉप हो जाता है मॉलिक्यूल्स का. एंड वी नो इफ देयर इज ए कंटेनर, तो वो इतनी एनर्जी तो रखते ही हैं. आई शुड राइट हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू KB इंटू
T. This is the energy of any gas per molecule, है ना, पर molecule इतनी होती है. अब यहां पर T जो होता है that you have to put in SI units, means Kelvin. It should be in Kelvin, right? अब 0 डिग्री है तो यहां 0 थोड़ी पुट कर देंगे. 0 डिग्री means is 273 Kelvin. So if you will put here 273 Kelvin, you are having the kinetic energy of those particles. So they are not at rest, right? So this statement is definitely at wrong. This statement could have been right when you are having here 0 Kelvin. But at 0 degree centigrade, there is a motion with some kinetic energy. So the answer should not be 0, है ना? The speed or the kinetic energy will not be 0 at 0 degree centigrade. तो first is wrong. First wrong है तो मुझे लगता है ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द मीन प्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, एंड इसमें भी यही बोला है इंक्रीजेस. तो मीन प्री पाथ क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला एक सिंपल सा मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आपको मीन फ्री पाथ फॉर्मूला कहीं भी कुछ उल्टा सीधा देख लो, सो जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल एक्सप्रेशन, √2 टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर. पाई डी स्क्वायर जस्ट एरिया है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एंड आपको यहां पे NV से मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ. पाई डी स्क्वायर इज एरिया वेयर D इज द मोलिक्यूल डायमीटर एंड NV इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फिर, नंबर ऑफ NV इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, राइट. नाउ आई नीड टू चेक द B एंड C पार्ट. तो B पार्ट में दे आर सेइंग दैट इफ डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो इफ डेंसिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड, है ना, डेंसिटी को आई शुड नॉट राइट एज D because D is diameter we have already taken. So density is basically rho, है ना. So rho is getting increased, it means volume is decreasing, और volume decrease हुआ, if volume is getting decreased तो mean free path भी decrease होगा. तो B वाला सही है क्या? I guess सही है, right? Density increase, volume decrease, तो mean free path भी decrease होगा. Moving to the C option, the mean free path of gas molecules increases if temperature is increased, keeping pressure constant. अब you are increasing the temperature, है ना? So just see this expression, pressure is constant and you are increasing the temperature, it means volume has to increase. If volume is getting increased, तो your mean free path will also increase. So I guess this is also right, increases and decreases. So B and C options are right. Moving to the D, average kinetic energy, ध्यान से पढ़ना भाई, पर मॉलिक्यूल एंड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. पर मॉलिक्यूल तक भी कहानी देके ये दे देते तो मेरा काम चल जाता, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज दे आर सेइंग पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो हाफ KB इंटू T होता है. इफ देर इज ए मोनोएटमिक गैस तो टोटल 3/2 हो जाएगी, डायटमिक तो टोटल 5/2 होगी, बट एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ KB T ही होती है. दैट इज व्हाट वी से एज अ law of equipartition, right? Maxwell law of equipartition. So that is something like kinetic energy equally हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड होती है और कितनी होती है, हाफ KB इंटू T. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है. इसका मतलब B and C statements are right, and if you see the options, B is the right answer, right? B and C are only correct. Moving to the next question. So this is, I would say, calculative question, but a nice question. So you are having a bullet made of lead, है ना? So let's say there is a bullet which is moving with, let's say, speed u, and that is you need to find. But what is the condition given to you is if it is getting penetrated into any object, obviously there will be some heat loss, and due to heat loss it will get warm up, है ना? And its temperature is getting increased from 127 degree centigrade to 327 degree centigrade. And by chance this 327 is the melting point of the bullet, means after reaching 327 degree it is getting melted, right? So you are having the melting point also, okay? And so you need to find that u, you need to find that initial speed, and what is given to you, like the initial kinetic energy, the 40% of this kinetic energy is getting used into heat. It is getting used into heat,
and what amount of heat you want to melt this lead from 127 degree centigrade to 327. Let us just calculate. So if there is a same state and you want to increase the temperature, so you must need a heat of ms into delta T. After that it is getting into getting melted, so that is latent heat of fusion you have to use, right? So this is the amount of heat you need to do this experiment and this process. So what is mass? I don't think mass is needed because it will finally cancel, है ना? S is specific heat, and please make sure whenever you do these questions, make sure you are seeing the units very carefully. They all are in SI unit, right? So specific heat is given to you 125. If you just see the change in temperature, that will be 200 Kelvin or degree centigrade, both are same thing because we are finding the change. And latent heat of fusion is 2.5 into 10 to the power 4, so you can write it as 25,000. This is also, I guess, 25,000, that is also 25,000, so total is 50,000 M. And this heat, where from where this heat is coming? From the kinetic energy, and entire kinetic energy is not getting converted, only 40% of half mv square is used. M and M will get cancelled. This is 0.2, so 1 by 5, so your U is 5 square, basically you can say 5 square into 10 to the power 4, so U will be 500 meter per second. That is B option. So I would say a good question, as well as like 2 chapter combined question and a little bit calculative question, but simple calculation. So I will put this question into medium category, not an easy category. Yeah. The next question is, you are having a position with respect to time. अब यार SHM करें, straight line करें, हमें क्या मतलब है? We just need the speed. So speed is dx by dt if you know the position. So just differentiate this expression with respect to time. The coefficient of t is pi. It will come out, right, by the chain rule. So you can write cos pi t plus 1 by 3. And the time is given to you 1 second. So just put here pi cos pi plus pi by 3. I hope you know ASTC rule. Pi plus pi by 3 means third quadrant. Third quadrant में cos negative होगा. It will be cos pi by 3 means minus pi by 2. Everything we have, this is given in meter. है ना? So this answer will be in meter per second, but the options are given in centimeter per second. So just multiply this with 100. Pi is 3.14, so it will be minus 157 centimeter per second. But they are not asking you this velocity, they are asking you the speed of the particle. It means you need to tell the magnitude of this, and minus is telling you the direction. So magnitude is 157 centimeter per second, that is B option. Moving ahead. So this is a quite surprising question for me in the JEE Main. Like they are saying, what is the total flux passing through the flat surface if Q is placed at the center? So if this is the flat surface and Q is at center, so every electric field lines will pass through this, right? Every electric field lines will pass through and area vector will be perpendicular to it. So from this flux has to be 0. This should be the correct answer for this question, whatever the language they have written, right? But there is no option which is having 0 as an answer. So intuitively मतलब what we have find कि इससे तो 0 है, तो they must have asked the flux from only this curved surface, and to find the flux through this curved surface you must have a closed surface to apply a Gaussian surface. And by symmetry you can say if phi is the flux through the upper sphere, phi will be the flux through the lower sphere, and by the Gauss law 2 phi is equal to q in by epsilon naught. So the flux through the one surface, or you can say one hemisphere, is q by 2 epsilon naught. उससे मैं ये कह रहा हूँ, but according to me this question should be bonus, है ना, because whatever language they have given, for that language answer should be 0, but that is not given to you in the options. So again the diagram is also given. 3 identical charged balls, each of charge 2 coulomb, are suspended from a common point. There is a point 1, 2 and 3. This is the triangle.
they have given, है ना. This question should also be bonus according to me. I'll tell you the reason. So by a silk thread of 2 meter length, so the length of these strings, right, that is 2 meter, and the bottom triangle which is forming here is an equilateral triangle of side 1 meter. Okay, that is given to you, and the ratio of the net force on a charged ball to the force between any two charged balls. Very nice question. ध्यान से सुनो. The ratio of net force on a charged ball. यार this system is in equilibrium, right? No charge is moving. तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो, राइट. सो नेट फोर्स आप चाहे इस पे फाइंड करो, इस पे फाइंड करो, इस पे फाइंड करो, जीरो ही होगा. तो जीरो बाई समथिंग तो जीरो होना चाहिए था. तो काहे का रेशियो की बात कर रहा है. तो इसका आंसर जो लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर शुड बी जीरो. आंसर शुड बी जीरो. बट आई गेस वो ये नहीं लिखना चाह रहे थे, उनको शायद यहाँ पे लिखना चाहिए था नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई फील कि उन्हें ऐसा लिखना चाहिए था नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो किसी चार्ज पार्टिकल पर एंड उसको डिवाइड कर दो किसी भी एक फोर्स से, तो उसका रेशियो क्या होगा. तो वैसे तो ये कंफ्यूजन करने के लिए डायग्राम दिया है. यू जस्ट सी दिस ट्राइंगल फ्रॉम द टॉप, तो यू विल हैव अ व्यू लाइक दिस. देयर आर 3 point charges, something like this. There will be a force like this, kq square by 1, है ना, 1 square because this side is 1, and there will be a force due to this two charges, that will be something like this, and this is an equilateral triangle. दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड की 60 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट विल बी √3 times ऑफ एनी ऑफ देम. तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द नेट फोर्स. नेट फोर्स में इस पे mg भी लगेगा, टेंशन भी लगेगा, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. दिस इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज, एंड किन्हीं भी दो का जो फोर्स है दैट इज kq स्क्वायर. तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे, √3 kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई kq स्क्वायर, दैट इज √3, विच सीम्स टू बी राइट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. डी ऑप्शन. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूछना यही चाह रहे थे, बट उन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया. मूविंग अहेड. So this is again a nice question. Please concentrate on the diagram because this chapter entire magnetism is related to the cross product, right? You must have a good knowledge of vector to solve the questions. So two long parallel conductors, these parallel conductors are given and there is a charge particle here जिसका आपको charge वाज दिया है, and you need to find the net force. So if any charge is in magnetic field, if any charge is in magnetic field, then the force you can calculate by this formula. Right? Velocity is also given to you. Velocity is also given to you. So you just need the B vector, right, at P point. So if you will see this wire, so like 4 ampere wire, so this is DL and DR is downward. So DL cross R is like inward direction. That inward has to be minus K cap. So if I write the magnetic field at P point, that should be mu naught I upon 2 pi into 4 centimeter, and direction is minus K cap. Please make sure you are applying a formula like in proper direction as well as in magnitude, है ना. Mu naught I upon 2 pi d is the magnetic field due to a parallel infinitely long wire at a distance r, right. So this is the field only due to this 4 ampere. If I talk about this 2 ampere, this is my direction of dl and dr is in upward direction, so dl cross r is outward, means k cap direction. So the magnitude is mu naught I upon 2 pi, total distance is 10, this is 4, so remaining is 6 centimeter, and the direction is outward, that is plus k cap. So this is how your magnetic field is, है ना. So let me just simplify it, है ना. Do not stuck into the calculation, do not put here blindly कि आप mu naught put कर दें. Put कर देंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, but try to reduce the expressions first. So mu naught upon 2 pi is common, 2 minus 2 is also common, 1 by 3 it will be minus, this is 1 k cap. This is something I can see from the above expression. So this will be minus 2 by 3, it means minus of mu naught upon 3 pi into 10 to the power minus 2 k cap. So this is the magnetic field at P point. अब आप देखेंगे तो magnetic field direction is in minus k cap and you need to do the cross product with B.
है ना। तो आई कैप, ध्यान से देखना, आई कैप इंटू माइनस के कैप, मैं लिख ही देता हूं एक्सप्रेशन को। यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ क्यू 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 क्यू, वेयर इट इज, क्यू की वैल्यू कहां दी है भाई, there is a point P located is a charge particle of 3 pi coulomb is given to you and V is 2 I cap plus should be there, not cross, yeah, so 2 I cap plus 3 J cap and this entire expression has to be cross multiplied with that expression and that is having minus k cap, right? So उस माइनस माइनस को पूरा बाहर ले लूंगा मैं अभी, just writing here k cap, है ना। एंड इस 3 पाई को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस म्यू नॉट अपॉन 3 पाई इंटू 10 to the power minus 2, 3 पाई से 3 पाई गेटिंग कैंसल्ड एंड दिस f वेक्टर इज माइनस 100 म्यू नॉट इंटू, ध्यान से देखना भाई, i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j कैप, सो 2 इंटू माइनस j कैप, j क्रॉस k क्या होता है, प्लस k कैप, सो दिस विल बी 3 i कैप। मैं तो कहता हूँ फंसो मत म्यू नोट की वैल्यू पुट करने में, यहाँ पे जस्ट सी दिस एक्सप्रेशन, i का कोफिशिएंट इज माइनस एक्स एंड मेरा i का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, i क्रॉस k ही दिया था ना, i क्रॉस k इज माइनस j कैप एंड j क्रॉस k इज, दिस इज एवरीथिंग इज फाइन आई गेस, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस है तो 100 म्यू नॉट इज माइनस का 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना। आप म्यू नोट को पुट करेंगे यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7, तो ऑब्वियसली ये वाला एक्सप्रेशन तो मैच कर ही जाना है एंड आई कैप कोफिशिएंट इज माइनस एक्स, सो जस्ट कंपेयर दिस विथ माइनस 3, तो x वैल्यू विल बी 3, x की वैल्यू पूछी उन्होंने प्रॉपर, राइट। सो x शुड बी 3 एंड दिस 2 जे कैप इज मैचिंग विथ इट, है ना। सो इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है फिर से ये, है ना। बाकी है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बी आपको निकालना था, फिर एफ निकालना था आपको, तो मीडियम से हार्ड के बीच में इस क्वेश्चन को वी कैन पुट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशन से, वैसे जनरली एक ही क्वेश्चन आता है बट पता नहीं क्यों 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं डायमेंशन का बोलूँ या एसी सर्किट का बोलूँ, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस, है ना। सो यू कैन सी एल इज इंडक्टर, सी इज कैपेसिटेंस, आर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अब यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो आपने आरसी सर्किट पढ़ा होगा, तो टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय आरसी, राइट। सो आरसी तो टाइम कांस्टेंट ही होता है, मतलब इसके डायमेंशन T1 ही होती है, ऑल राइट। एलआर सर्किट पढ़ा होगा, उसमें टाइम कांस्टेंट इज L by R, तो इसकी भी यही होती है। एंड एलसी ऑसिलेशन या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एसी सर्किट्स, ये आपने पढ़ा होगा, तो ओमेगा इज गिवन बाय 1 by रूट LC, है ना। तो आप सोच के देखो, यदि ओमेगा की डायमेंशन इज T-1, तो रूट LC की डायमेंशन डेफिनेटली T1 होनी चाहिए, तो ये भी टाइम है मतलब, सो पक्की बात है डी ऑप्शन टाइम नहीं आएगा। अब ये निकालने क्यों बैठेंगे हम कि ये क्या आएगा, जब आंसर मिल गया है तो, राइट। मूविंग अहेड, so there are 2 statements, we need to find which one is right or which one is wrong or both are correct or wrong. So first one is a time varying electric field is a source of changing magnetic field and vice versa. This is a nice question which like nice concept which we read in electromagnetic waves and also in electromagnetic induction. Thus a disturbance in electric or magnetic field creates electromagnetic waves. Definitely, like due to the change in magnetic flux we were having induced EMF and due to the change in electric field we were having magnetic field also, है ना। Those are the region which happens in electromagnetic waves which are produced by accelerated charge particles, है ना। They will produce magnetic field as well as electric field which are in phase but having 90-degree angle with each other, mutually perpendicular, right. So this statement is perfectly right, theoretical statement is there. In a material medium, बस यहीं पर इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, दे आर राइटिंग मीडियम, एंड मीडियम में ऐसा थोड़ी होता है, मीडियम में यू हैव टू टेक द स्पीड लाइक द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, एंड इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू आर इंटू ई आर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, ई आर इंटू म्यू आर। दिस एक्सप्रेशन शुड बी राइट, बट उन्होंने केवल ये लिख दिया, तो ये तो तब होता है जब यू आर हैविंग एयर और वैक्यूम, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यू आर हैविंग अ प्रॉपर मीडियम,
दे हैव सेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे म्यू नॉट ई नॉट के बजाय कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते तो सही होता। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट वन इज राइट। सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो सी इज द आंसर। मूविंग अहेड, ये कटिंग ऑफ पावर का बहुत फेमस, बहुत ही मतलब फेमस और यूनिक क्वेश्चन हम कह सकते हैं। कटिंग ऑफ लेंस में हम पढ़ते ही यही है ना। सो जब आप इसको ऐसे कट करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाती है। जब आप ऐसे कट करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है फोकल लेंथ पे। रीजन बड़ा सिंपल होता है। इफ यू विल जस्ट सी द फॉर्मूला ऑफ लेंस मेकर, राइट, लेंस मेकर फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। सो जब आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करते हैं, यू कट लाइक दिस, तो आप इस एक्सप्रेशन की और इस कर्व की रेडियस देखेंगे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, म्यू में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इफ दिस पावर इज पी तो डेफिनेटली इसकी पावर भी क्या होगी? पी होगी। बट जब आपने इसको ऐसे कट कर दिया, इट मीन्स आपने एक रेडियस को इनफाइनाइट बना दिया है, तो जो काम यहां पे 2/r हो रहा था वो केवल 1/r हो रहा है, राइट। तो पावर आधी हो जाएगी इसमें। जब आप इसको ऐसे काटेंगे तो क्या हो जाएगी? पावर आधी हो जाएगी एंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सिंपल रीजन है। यहाँ पे एक टर्म इन्फिनिटी डाल दोगे, पुराने वाले से कंपेयर करोगे तो आप फोकल लेंथ आपको डबल मिलेगी एंड पावर आधे मिलेगी। तो अब जरा ऑप्शंस को मैच करा लें। पावर ऑफ L1, वेयर इज L1? L1 इज दिस, इट शुड बी P। और इन्होंने पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ लेना भाई। इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग L1 की जो पावर है दैट शुड बी ओनली P, सो दिस इज रॉन्ग। एंड पावर ऑफ L2 इज P/2, राइट। पावर ऑफ L3 इज P/2, राइट। पावर ऑफ L1 इज P, या ठीक है। तो आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो विच ऑप्शन शुड बी आंसर? ए, है ना। इनकरेक्ट तो यही है, ठीक है। तो जब भी आप लेंस को ऐसे काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे काटने पर आधा हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप मीडियम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। मूविंग अहेड, बेसिक क्वेश्चन एकदम रिफ्रैक्शन से। लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू लेट्स से डेंसर। रेयर में कुछ भी हो सकता है बट आई एम जस्ट टेकिंग एयर, है ना। तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। बट हमें इन सब पे नहीं जाना है। दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो आपको पता है कोई भी लाइट मीडियम में एंटर करती है तो इट्स स्पीड गेट रिड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, C/μ। तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, मतलब म्यू बढ़ रहा है। म्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी हैज टू बी डिक्रीज एंड वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज गिवन बाय f इंटू लेमडा। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो f और लेमडा का कैसे कमेंट करें? तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ओनली, राइट, हु इज प्रोड्यूसिंग द लाइट, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। सो फ्रीक्वेंसी हैज टू बी कांस्टेंट एंड इफ इट इज गेटिंग डिक्रीज सो लेमडा हैज टू बी डिक्रीज, राइट। सो v एंड लेमडा आर गेटिंग डिक्रीज्ड बट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। विच ऑप्शन शुड मैच? आई गेस सी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्वाइट इजी क्वेश्चन आई वुड से। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सबसे बेसिक क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, है ना। इन अ हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, ध्यान से देखो रेडिएशन कब निकलती है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाता है एंड देन इट डज नॉट रिमेन स्टेबल फॉर सो मच टाइम देयर, सो इट विल जस्ट कम डाउन लाइक दिस एंड लाइक दिस, सो मच फोटॉन्स विल इमिट। तो जो ये फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी इज फाउंड बाय, इफ लेट्स से दिस इज E1, ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती है तो हायर माइनस लोअर करोगे ना भाई, दिस इज E3, सो E3 माइनस E1 करोगे या E2 माइनस E1 करोगे या फिर E3 माइनस E2 करोगे, बट नॉट E1 माइनस E2, ऐसा तो नहीं करोगे। दैट हैज टू बी इक्वल टू hν, सो यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑल्सो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरे स्टेटमेंट में सेम चीज को उन्होंने करेक्ट कर दिया है कि E2 माइनस E1 बाई H करा करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज ट्रू, मीन्स डी ऑप्शन एज राइट आंसर। ट्रांजिस्टर में यू वांट टू यूज, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है ना। वैसे ट्रांजिस्टर से बहुत डरावने क्वेश्चन आते हैं बट बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ट्रांजिस्टर टू एक्ट एज अ स्विच, स्विच मीन्स ऑन एंड ऑफ। तो कट ऑफ रीजन में ये कंप्लीटली ऑफ की तरह काम करता है, मतलब स्विच इज ऑफ, एंड सेचुरेशन रीजन में कंप्लीटली ऑन की तरह काम करता है। सो दिस इज द लाइक ऑपरेटेड इन सेचुरेशन एज वेल एज कट ऑफ स्टेट, है ना। आपको ऑन रखना है तो सेचुरेशन स्टेट में, ऑफ रखना है तो कट ऑफ स्टेट में, या। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। तो इसमें
मतलब देखो ये द वे जेई मेंस आस्क द क्वेश्चन नीड नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू आंसर इन द सेम ऑर्डर. You just see the options, all statements are true, these three are true, these three are true, these three are true. So मेरे को इन ऑप्शंस को पढ़ के आई एम फीलिंग लाइक कि वाई टू फाइंड द ट्रू ऑप्शंस नाउ, जस्ट पिक अ रॉन्ग वन, दैट्स इट, है ना. रॉन्ग वन कोई भी हुआ तो मेरा आंसर आ जाना है, क्योंकि देखो ना अब 3 तो सही हो रहे हैं एटलीस्ट. तो जरा पहले से स्टार्ट करते हैं. द साइज ऑफ द एंटीना शुड बी कंपेरेबल टू द सिग्नल वेवलेंथ विच इज अनरियल सॉल्यूशन फॉर अ सिग्नल फॉर longer wavelength. आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो तो हाइट ऑफ टावर इज गिवन बाय लैम्डा बाई 4, है ना. तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, ऑर्डर के ही होते हैं आपस में, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय अ लॉन्ग वेवलेंथ वुड बी हाई, और पावर जो होती है इफेक्टिव पावर जो कि रेडिएटेड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. तो लॉन्गर वेवलेंथ है मींस लैम्डा इज हाई, तो पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि वहां लिख दिया हाई. तो ये भैया ये स्टेटमेंट गलत है. इफ बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो बी की छुट्टी हो जानी चाहिए. यहां से भी बी आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एंड ये भी नहीं हो सकता. तो पक्की बात है यही होगा, सिंपल. तो बाकी दो में टाइम वेस्ट करना होगा यदि आप एग्जाम में कर रहे हैं, बट हाँ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर समझ सकते हैं. ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं सी एंड डी आपस में रिलेटेड है. मॉड्यूलेशन ऑफ वेव्स हम इसीलिए करते हैं. वी वांट टू अवॉइड मिक्सिंग अप सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट ट्रांसमीटर साइमल्टेनियसली, दैट इज व्हाई वी डू नॉट ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी. बिल्कुल सही बात है. अब इसी लो को आपको आगे भेजना है, ज्यादा रेंज तक भेजना है, तो व्हाट यू डू इज सुपर इंपोज कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, मॉड्यूलेट कर देते हैं आप बेसिकली, है ना. तो सी और डी बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं. मूविंग अहेड, yeah, so this is the question from NLM, है ना. बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत फेमस क्वेश्चन अपन ने किए हैं, जितने किए होंगे आपने उससे तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आई वुड से. देयर इज ए 10 kg मास एंड आपको व्हाट यू आर डूइंग, इसके मिड पॉइंट पे जाके यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन हियर. डेफिनेटली आप 30 न्यूटन लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है रस्सी अपनी दुनिया में लटकी रहेगी, है ना. देयर विल बी सम मोशन लाइक दिस. इधर इज 30 न्यूटन एंड इधर 10 kg की जगह 100 न्यूटन लिख लेता हूँ उसका वेट, राइट. एंड देयर इज अ टेंशन, एंड आपको पूछा क्या है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये थीटा आपको बताना है. अब जस्ट इमेजिन दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए. टेंशन उधर लग रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट टेंशन के अपोजिट आना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा जब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा. तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होना चाहिए. सो टेन थीटा, इसके साथ एंगल निकालना है तो हम हमेशा ऑपोजिट लेते हैं, इसके साथ एंगल चाहिए तो ये बाई ये करते हैं, राइट. सो दिस विल बी 0.3. तो थीटा जो होना चाहिए दैट शुड बी 10 इनवर्स 3 इंटू 10 टू द पावर -1, सिंपल, राइट. तो जिस इस x की वैल्यू उन्होंने पूछी है दैट इज 3. मूविंग अहेड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं अभी भी कहूँगा, मैं खुद भी मतलब आई फील कि इसमें कुछ उनको बहुत क्लैरिटी देनी चाहिए थी. उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये सॉलिड सिलेंडर है, होलो है ना, बिकॉज यार व्हील तो कैसा भी हो सकता है जो आपने लिखा है उसके हिसाब से. बट मैं फिर भी जिस तरीके से उन्होंने आंसर दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज़ अ 3 kg मास, है ना, एंड देयर इज़ अ व्हील. तो ये व्हील यहाँ पर आता है नीचे एंड दिस इज गोइंग अप, एंड दोनों रस्सी से आपस में कनेक्टेड हैं, एंड दोनों रस्सी से आपस में कनेक्टेड है, ये ऊपर जाएंगे. रस्सी से कनेक्टेड होने का मतलब बोथ आर हैविंग सेम ट्रांसलेशन स्पीड, एंड दिस इज मूविंग एज वेल एज रोटेटिंग ऑल्सो, राइट, रोलिंग ऑल्सो. इट इज गिवन टू यू, दिस इज फ्रिक्शनलेस बट दिस इज नॉट फ्रिक्शनलेस, ठीक है. एंड फिक्स लेंथ है 12 kg एंड 3 kg एज गिवन. बोथ द एंगल्स आर इक्वल. If both the angles are equal, definitely mg का जो कंपोनेंट होगा वो इस पर ज़्यादा लग रहा है तो वो नीचे आएगा. तो आपसे यही पूछा है when it will come down तो what velocity it will have, है ना. तो भैया टाइम वाइम की कहीं चर्चा करनी नहीं है, वेलोसिटी निकालनी है तो एनर्जी कंजर्व कर देते हैं. रोलिंग कर रहा है तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा. लेट अस टेक अ रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 0. अब क्या करते हैं हम, इसकी एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, दैट इज k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2. क्यों कर रहे हैं,
अभी बोला मैंने फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक लग रहा है, देयर इज नो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। सो K1 इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पूरा सिस्टम रेस्ट पर था। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ये तो खुद ही नीचे बैठे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी जीरो है, बट ये h हाइट पर है तो 12g होती है ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, सो वी आर राइटिंग 12gh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा अच्छा टर्म है, इसको अपन प्यार से लिखेंगे। इफ वी टॉक अबाउट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इफ वी टॉक अबाउट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये तो यहां आ जाएगा और ब्लॉक यहां चला जाएगा, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट इसकी अब की बार 3gh हो जाएगी, mgh। ठीक है, तो अब फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो भैया ये मान लेते हैं हम यहां पर जब आए तो v वेलोसिटी से चल रहा है ये ब्लॉक, तो इसकी हो गई हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है जी, एंड इसकी बात करें जब ये नीचे चल रहा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो माई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस इज 12 है ना मास, एंड व्हाट अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो जो आंसर दिया है उसके लिए आई एम टेकिंग mr स्क्वायर एंड ओमेगा इज बेसिकली v by r स्क्वायर बिकॉज इट इज प्योर रोटेटिंग, राइट। सो 12 में से 3 जाएगा तो 9gh, हाफ एंड हाफ विल बी 1 and 3/2 is 5/2 v square, it should not be 5/2, m is basically here it should be 12, right? So 12 half and so 12 mv square, 12v square plus 3/2 v square will be answer, that is 9gh is equal to 27/2 v square. So my answer should be root 2gh by 3. But if you see the expression, it is something written like this, 1/2 into xcs. So if you want 1/2 outside, so what you can do, just multiply 4 up and down, so 1/2 will come outside and inside you will be having 8gh by 3. Now see that expression and this expression. So this value of x is 8/3 which is approximately 3, not exactly equal to 3, but उन्होंने 3 आंसर दिया है, तो according to me this should be the right explanation जो उन्होंने मानी है। अदरवाइज उनको they have to mention कि ये व्हील डिस्क लूँ, इसको मैं क्या लूँ, है ना, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज करते ही फाइनल आंसर भी हमारा चेंज हो जाएगा। मूविंग अहेड, this is the very easy question from thermodynamics. You are having a isobaric process. Isobaric process में work done is P delta V, or you can also write nr delta T. इसकी value is given to you 400 joule. You need to find the heat. And isobaric हो, basically pressure constant हो, तो you can write Ncp dt. And gamma is given to you 7/5. 1.4 means 7/5. It means it's diatomic, and diatomic के लिए Cp is 7/2r. So you can write nr delta T, and nr delta T की वैल्यू ऊपर ही आपको क्वेश्चन में दी है, that is 400. So just put here 400, you will get 1400 joule. Make sure you are writing proper units. Okay, so 1400 joule should be my answer for this question. Moving ahead, there is an SHM question, and question क्या है, let me just explain you. You have to find, like this is mean position, this is positive extreme, this is negative extreme, and if any particle, इसको अपन एक रिवोल्यूशन कहते हैं, it means it is taking capital T time. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इज T/4. अब उन्होंने पूछा है यहाँ से लेके x = a/2 तक आने का कितना टाइम लगेगा, दिस टाइम। तो आपको ये टाइम पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, बिकॉज टोटल टाइम T/4 है और इसमें से इतना टाइम घटा दो तो काम हो जाएगा। एंड दिस टाइम a/2 हो तो T/12 होता है। कैसे होता है, वी कैन राइट एज x = sin ωt। बेसिक ले रहे हैं, बाकी पता नहीं है कैसा भी ऐसे चाहो, ये वाला तो ट्रू होगा ही। इफ x इज a/2, सो दिस विल बी समथिंग लाइक 1/2 मीन्स π/6, π/6 = 2π/t × t। तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी आई,
t/12, that's what I was telling you. So if total time is t/4, इसमें से t/12 घटा देंगे तो the remaining time will be t/6. T is total time period for one revolution, which is given to you in the question 6 seconds. So 6/6 is basically 1. तो 1 should be answer. यही पूछा था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट करेस्पॉन्डिंग टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से यहां तक आने का टाइम दैट इज t/6 मींस 1 सेकेंड. मूविंग अहेड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको कुछ इस तरीके का दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली प्लेट इज पैरेलल टू दिस प्लेट. सो दिस इज ए कैपेसिटर ऑफ थिकनेस b दैट इज 5b. दिस इज अनदर कैपेसिटेंस एंड इनके बीच के थिकनेस इज 3b. दिस इज अनदर कैपेसिटेंस, इनके बीच की थिकनेस इज b. एंड आप कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हवा में तो करेंगे नहीं, प्लेट्स पर करेंगे. जब आप इन प्लेट्स पर करेंगे तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. मतलब मुझे एक एक का c निकाल के सबको ऐड कर देना है, बिकॉज ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. तो पहले का कैपेसिटेंस लिखते हैं अपन C1 प्लस C2 प्लस C3 यू नीड टू डू टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. पहले का एरिया इज रिटन A, epsilon naught is basically the medium, D is 5b. दूसरे का A epsilon naught upon 3b, A epsilon naught upon b. You can see here LCM is 15, right? So taking 15 as LCM, 3 plus 5 plus 15, that is 23/15 A epsilon naught by b. जरा मैच कराएं एक्सप्रेशन से. x/15 means x की वैल्यू इज 23. ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. एससीबी में भी दे रखा है ये क्वेश्चन. सो करंट डेंसिटी इन ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4, दिस इज गिवन टू यू. लाइक एक आपके पास सिलेंडर है ऐसा कुछ, एंड इसके अंदर करंट डेंसिटी, बेसिकली करंट जाएगी तो करंट डेंसिटी वी कैन डिफाइन करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज गिवन टू यू 1 × 10⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड कि इसकी r/2 से r तक, मतलब इस एरिया में, कितनी करंट बह रही है. टोटल मान लेते हैं I है, टोटल तो निकाल ही सकते हो, करंट इनटू टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यू वांट दिस. तो भाई इतना सा एरिया निकाल लो. टोटल एरिया इज πr², इसमें से दैट इनर एरिया इज π × r/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4/3 πr². 3/4, नॉट 4/3, 3/4. दिस इज द एरिया एंड करंट डेंसिटी आपको गिवन है. तो भैया करंट जो शेडेड पोर्शन है दैट उसमें कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी इनटू एरिया रेडियस इज गिवन टू यू 4 mm. तो भैया इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपरली. इट्स स्क्वायर. So I is 3/4 10⁻⁶ pi 16 10⁻⁻6 4. तो करंट इज बेसिकली 12 पाई एम्पियर एंड हैप्पीली उन्होंने पाई की टर्म्स में ही आंसर दिया है. तो x इज बेसिकली 12. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रखा है इस पेपर में. ठीक है, तो आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और आपको क्या करना है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम. फॉर दैट यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ m. तो ये तीनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ma/3. ये दोनों भी पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, a/2m. एंड बोथ आर इन सीरीज, सो r इक्विवेलेंट विल बी ma/3 प्लस a/2m. एंड दिस फंक्शन हैज टू बी मिनिमम. क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम करना है. तो वेरिएबल है हमारे पास m, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. माइनस a/2m², इट हैज़ टू बी 0, सो m की वैल्यू विल बी √3/2. हालांकि हमें यहीं से आंसर नहीं देना चाहिए, वी शुड प्रोसीड एंड चेक कि क्या इस वैल्यू पर मैक्सिमम है या नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू ऐसा ही होगा, डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है ना. क्वेश्चन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही आंसर है इसका. तो m इज √3/2. इस वैल्यू के लिए जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी मिनिमम. मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर x था नॉट 1/2. सो x की वैल्यू इससे कंपेयर करना जरा, तो x की वैल्यू इज 3. x की वैल्यू इज 3. ठीक है, मूविंग अहेड. ये कहाँ लिख दिया इसने यहाँ पे,
हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को आप डालते हैं परपेंडिकुलरली तो वो एक सर्कुलर मोशन करता है, v क्रॉस b करेंगे तो ऐसा कुछ है ना, एंड इसकी रेडियस जो है दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय mv बाई qb। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, तो एक चीज़ बड़ी प्यारी दी है इन्होंने कि इन सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। mv को हम मोमेंटम लिख सकते हैं, एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज लाइक दिस। So you can say that radius is proportional to root m by q. Radius is proportional to root m by q. And आपके पास कौन कौन से दो पार्टिकल हैं? ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो भैया you need to take the ratio of deuteron as well as proton. So mass of deuteron upon mass of proton into charge of proton upon charge of deuteron. And happily दोनों के चार्ज तो ए ही होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। Mass of deuteron is twice of mass of proton, है ना, ड्यूट्रॉन मतलब समझते हैं ना 1h2, सो आंसर विल बी √2। तो जरा देखिए इस रेशियो में x की वैल्यू हैज़ टू बी 2, कंपेयर कर दो दोनों को, ठीक है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये EMI का क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बट इन्होंने फालतू का डेटा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। सो यू आर हैविंग अ मेटेलिक रॉड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो नॉर्थ साउथ में यू आर हैविंग अ मैग्नेटिक लाइक अ रॉड, मेटेलिक रॉड जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास, यू आर हैविंग 20 सेंटीमीटर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का आपको दिया है, मींस यू आर हैविंग BH एट 4 × 10⁻³ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री। पता नहीं क्यों ही दिया है, जस्ट कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है। इफ यू रिमेंबर कि हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज BH एंड अदर इज BV। अब ये BV को कट नहीं कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो तो BV को कट नहीं कर रहा है, ये केवल BH को ही कट कर रहा है। तो BH को कट करेगा तो यू हैव टू टेक दिस, एंड ये BVL से चल रहा होता है, तो B इज गिवन एज 4 × 10⁻³ V इज 20 एंड L इज 0.2। जरा चेक करें इसको, 4 × 60 16 आ रहा है और मिली वोल्ट में ही पूछा है, सो माई आंसर शुड बी 16 मिली वोल्ट। द EMF इंड्यूस्ड इन द रोड इज x मिली वोल्ट, शायद उन्होंने लिखा होगा यहाँ पे, या कितने मिली वोल्ट होगा, तो योर आंसर शुड बी 16 मिली वोल्ट, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ है तो आप इसको ऐसे चला रहे हो, ऑल राइट। मूविंग अहेड, कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड्स, है ना, डायोड्स के कट ऑफ वोल्टेज आपको दोनों को गिवन है, एंड आपको करंट बताना है थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। दिस रेजिस्टेंस से आपको करंट बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस डायोड, मींस दिस इज इन फॉरवर्ड बायस्ड, दिस इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस वाले की हम छुट्टी कर सकते हैं, नो करंट विल बी, बाकी करंट तो होती है बट बहुत कम होती है, तो वी कैन लाइक रिमूव फ्रॉम दिस सर्किट। सो जो बचा हुआ सर्किट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज 60 ओम, दिस इज 40 ओम एंड इसके अक्रॉस इट इज गिवन टू यू दैट इज 0.6 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V/R 1 एंड ड्रॉप आ गया उसके अक्रॉस 0.6, तो 1 - 0.6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज 100, सो 0.4 अपॉन 100 दैट इज 4 मिली एम्पियर। तो करंट कितना हो गया, 4 मिली एम्पियर, दैट वाज आस्क्ड टू यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो मेंस लेवल का पेपर था, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे इसमें, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। ऑल राइट, बाय बाय।
Hello, one. Welcome back, guys, with the solution of chemistry section of the JEE exam conducted on 27 June, Shift 2. Okay. So अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री सेक्शन शिफ्ट 1 का एग्जाम का पेपर डिस्कस किया था और हम शिफ्ट 2 का डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो yes, let's start with the questions. 30 questions. Okay. Yeah, so first question था, which among the given plots is the correct plot for a pressure versus density? So guys, from ideal gas equation हम लोग निकाल सकते हैं PV is equal to nRT, right? Number of moles is mass upon molar mass, right? And if you take volume in the denominator, then it becomes mass by volume is density, all right? That means these are pressure versus density graph. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं pressure versus density graph है. तो P and D, what is the relation? Y is equal to mx plus 0. मतलब it fits in a straight line. Y axis पे pressure ले लेंगे, x axis पे हमारा आ जाएगा density. ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, इट विल पास थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब ये वाले ग्राफ नहीं होंगे बिकॉज दे हाइपरबोलिक. ठीक है, अब इनको पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका होता है, टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, एक डेंसिटी की वैल्यू चूज कर लो. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वैल्यू चूज करो डेंसिटी की. ठीक है, ओके, लाइक दिस. अब चेक करो, टेम्परेचर T1 पे सबसे कम डेंसिटी है. ठीक है, टेम्परेचर T2 पे डेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर T3 पे डेंसिटी और बढ़ गई. तो इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस. अगर हम डेंसिटी कांस्टेंट रखें तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज, राइट? ठीक है, अगर हम एज टेम्परेचर हम डेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इसका मतलब ये करेक्ट है. ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया. वहाँ पे जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. यस, बिकॉज PCl5 के जो हमारे स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो वहां पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d. द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी करेक्ट है. PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स, राइट, बट आर दे स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स? नो. ठीक है, क्यों? जो हमारे एक्सियल ग्रुप्स होते हैं दे फेस ग्रेटर बॉन्ड पे बॉन्ड पर रिपल्शन, राइट? तो इसकी वजह से जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो शॉर्टर होंगे, अगर जो हमारे ग्रुप्स है वो सिमिलर है, और जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो लॉन्गर होंगे और वीकर होंगे. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ये, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर. ठीक है, द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाइन इन वन प्लेन. यस, ये हमारा एक प्लेन हो गया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया. लीचिंग ऑफ गोल्ड विद साइनाइड आयन इन द एब्सेंस ऑफ एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड 3. नो, it leads to the formation of complex of gold 1. ठीक है, zinc is oxidized during the displacement reaction carried out for the gold extraction. yes. ठीक है, ये गोल्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सोल्यूशन में चला जाएगा लीचिंग में. अब हम इसमें जिंक डाल देंगे. जिंक हमारा यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इसमें, और जो गोल्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 कैसा है? करेक्ट है, right? Okay, vapor density is molecular mass divided by 2. Aman Sharma, vapor density is molecular mass divided by 2. क्योंकि मिनिमम नंबर 1 हुआ ना अमन, मिनिमम मोलिकुलर मास में एटॉमिसिटी 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि मिनिमम एक एटम होगा ना अमन, राइट? दैट इज व्हाई वी टेक एटॉमिसिटी एटलीस्ट 1. ठीक है, इफ यू कैन टेक एटॉमिसिटी 2, 3, 4 लाइक दैट, बट दैट विल नॉट बी द मिनिमम मोलिकुलर मास. ठीक है, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ मिनिमम मोलिकुलर मास. And vapor density of any substance is molecular mass divided by 2. By the way, vapor density is density of any substance divided by density of reference gas, which is hydrogen, right? Correct order of increasing intermolecular hydrogen bond strength. Of course, guys, water की hydrogen bonding strong है, तो ये गलत हो गया. ठीक है, अमोनिया, मीथेन एंड HCN. Of course, HCN में ज़्यादा probability है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की as compared to मीथेन, because the electronegativity difference is very स्मॉल, राइट? और तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, मीथेन हैज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑल इन फैक्ट. HCN में प्रोबेबिलिटी थोड़ी बड़ी, और अमोनिया तो हम लोग जानते हैं कि उसमें प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 3. इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस
अगेन सी शिफ्ट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें तो एटम का साइज इंटरमीडिएट होगा, अनायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और कटायन का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। फर्दर कटायनिक साइज जो है वो इन्वर्स, कटायन का जो हमारा साइज है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है चार्ज पे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना कम साइज होगा, और अनायन का जो साइज है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, बिकॉज ग्रेटर द नंबर, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड हेंस ग्रेटर विल बी द साइज। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, N3 माइनस O2 माइनस फ्लोराइड, अनायंस बिगर, ठीक है, देन कटायन, द ट्रेंड बिकम्स ऑपोजिट, राइट। The gas produced by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite, it's a double displacement reaction first, NH4NO2 will be produced along with NaCl, right? But then you may recall that this on decomposition produces N2 plus 2H2. It's a method for the production of nitrogen gas, ठीक है। तो correct answer कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। इतना क्लियर हुआ गाइस, ठीक है। देन टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and reason R. Fluorine forms only one oxo acid. Yes, it forms only one oxo acid, HOF. Because fluorine has the smallest size amongst all halogens and is highly electronegative. Yes. See, unlike other halogen atoms, fluorine is very small. It cannot accommodate a large number of boundary atoms. Moreover, fluorine is highly electronegative. It cannot show, it does not show positive oxidation state, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की, तो ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड जो है HClO2, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, HClO3 +5, HClO4 +7, बट फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड, अनलाइक अदर इट डज नॉट, ठीक है। सो यस, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। The metal having highest 2-0 standard reduction potential in 3D series. Of course, this is a very popular. The only metal in 3D series from scandium to zinc which has positive electrode potential for this is copper, right? So this is 0.34 volt. You guys may remember this value from electrochemistry, right? All other metals have negative electrode potential, but copper has positive value, right? Copper wants to get reduced in the zero form. The f orbitals are half and completely filled respectively in the lanthanide ion. So of course this is, you can see the electronic configuration, terbium is 4f9, okay, and then s2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो s2 निकल जाएगा, f क्या बचेगा 7, and likewise ytterbium, ठीक है, तो उसमें हमारा f14 बचेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बताना है इसमें, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है 3, तो d5 हो जाएगा। सारे पांचों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे हैं, अनपेयर्ड, राइट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, कैन नॉट फोर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है, बट दिस टाइम इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट विल फोर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो D5 में पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है, और D2sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन MnCl 6- 3-, तो यहाँ पे भी आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, मैग्नीज होता है 3d5 4s2 +3 मतलब 3d4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोराइड हाई स्पिन बोल रहे हैं वो, तो क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा, उसने बोल भी दिया है हाई स्पिन। MnCN6 अगेन +3 है, बट दिस टाइम इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, वी विल ओनली पेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वी विल लीव दिस बिकॉज वी डोंट नीड दीज 2d ऑर्बिटल्स, तो इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ यू कैन सी जो मिनिमम हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो B में है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा, उसके बाद हमारा ऑप्शन D हो जाएगा, देन ऑप्शन C एंड देन ऑप्शन A, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ you don't have to calculate the magnetic moment, just calculate the number of unpaired electrons, that will suffice, ठीक है, clear। Then on the surface of polar stratospheric clouds, hydrolysis of chlorine nitrate, ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारे क्या बनेगा this,
ठीक है, एंड HOCl, और अगर इसकी HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, HNO3 एंड Cl2, ठीक है। तो ये याद रखना, ओजोन डिप्लीशन में आता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, इंपॉर्टेंट है, माइट बी आस्क्ड, हैज बीन आस्क्ड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो गाइज ये एरोमेटिक हो गया, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, हाईली अनस्टेबल, ओके। 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, हाईली अनस्टेबल। दिस इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज यहाँ पे 2 सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑफकोर्स कौन सा हुआ हमारा, ये वाला, ठीक है, राइट, बिकॉज इट हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक, मोर स्टेबल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा गाइज, सो यहाँ पे ध्यान देखना, ये एन ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एन ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन एटम्स जो हमारे वो स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, दिस वुड बी CH, एन ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन करेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल टेक अवे द एसिडिक H+, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर गाइस, इतना क्लियर सबको। अब इसकी रिएक्शन करा दी हमने C5H11Cl से, SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे C5H11Cl से, तो आई डोंट हैव टू शो दैट, राइट, दिस विल अटैक, chloride will leave and you will get what, n-butyl group, then carbon triple bond carbon, and then C5H11, ठीक है। Now you are carrying out the reduction with Lindlar's catalyst, which of course gives cis alkene, right, because both hydrogen atoms add from the same side. Then of course you will get which molecule, this molecule, right, cis, you see hydrogens are on the same side, there is n-butyl group, there is C5H11, so that is the correct answer। आई बात समझ में सबको। Then in this case the product A of the following sequence of reaction, ethyl benzene है guys, simple reaction है NCERT बुक की, ठीक है, simple reactions है। ethyl benzene हमारा ये हो गया, bromine with iron, that means वो FeBr3 जनरेट करेगा, which is a Lewis acid catalyst, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन जाएगा, Br, ठीक है, इसी में दिखा लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट रिएक्शन का आफ्टर प्रोडक्ट। अब क्लोरीन से हीट करा रहे हैं, तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो गया, फ्री रेडिकल क्लोजिनेशन हो गया। जब फ्री रेडिकल हमारा क्लोरिनेशन हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ कोर्स बेंजीन पे तो रिएक्शन होगी नहीं, एल्काइल पार्ट पे रिएक्शन होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देता हूँ, बिकॉज बेंजाइल रेडिकल विल बी मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। बेंजाइलिक पोजीशन ऑलवेज याद रखना, अगर बेंजीन से एल्काइल ग्रुप है तो बेंजाइल रेडिकल इज सफिशिएंटली स्टेबल, ठीक है। आफ्टर दैट इन द ऑप्शन सी अल्कोहलिक केस रिएक्शन कराने, बीटा एलिमिनेशन है, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इधर से क्लोरीन हटेगा, यहाँ से हटेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला, ठीक है, राइट। तो ये हमारा वाइनल ग्रुप आ गया, पैरा पे ब्रोमो आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल है ना, बिल्कुल तीनों रिएक्शन बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी में दे रखी है यार, वेरी वेरी इजी, ठीक है, द पेपर। देन decarboxylation, this was some interesting question, slightly logical question. Decarboxylation of all 6 possible forms of diaminobenzoic acids, ठीक है। Diaminobenzoic acids means there are 2 NH2 groups and 1 carboxylic group, yields 3 products A, B and C. 3 acids give a product A, 2 acids give product B and 1 acid give product C, ठीक है। In this question you will have to back determine, right, this is retro synthesis kind of thing। तो जब डायमिनो बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक विल गो अवे एंड यू विल हैव 2 NH2 ग्रुप्स, राइट। नाउ टेल मी हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, राइट, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डायमिनो बेंजीन। ऑफ कोर्स देयर आर 3 आइसोमर्स, एक मैं यहां पे बना सकता हूं, ठीक है, ऑर्थो। दूसरा आइसोमर कौन सा होगा गाइस, दूसरा हो जाएगा मेटा, एंड तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा पैरा, ठीक है। 3 ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं ए बी एन सी, ठीक है। अब इसमें बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां कहां पर हो सकता था, व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। हियर these are equivalent positions, remember, right, these are equivalent positions and these are also equivalent positions. So basically
when you attach carboxylic group, when you make it a diaminobenzoic acid, it would lead to the formation of two distinct molecules. ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हो गया 1, देन ये दोनों आइडेंटिकल हैं 2, एंड यहाँ पे हमारा हो गया 3rd. ठीक है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट डाइमिनोबेंजोइक एसिड्स. एंड यहाँ पे हमारी एक ही पोजीशन है, कार्बोक्सिल यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, फिर यहाँ पे लगाओ, इट डजंट मैटर, चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमारा एक ही आइसोमर होगा. तो 1 2 3 4 एंड 5 6 टोटल हमारी कितने रिएक्टेंट पॉसिबल हुए? 6. तो ठीक है, नाउ आवर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव डिड्यूस्ड इज कंसिस्टेंट विद द डेटा प्रोवाइडेड. नाउ अ वेरी स्मॉल लॉजिक हियर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट C. बताओ इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तुम सोचोगे सर कौन याद करेगा 63, 90, 142, 104, कौन याद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है. ठीक है, ये ऑर्थो डाइमिनोबेंजीन है, ये मेटा डाइमिनोबेंजीन है, पैरा डाइमिनोबेंजीन है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी किस्म होगी इस वाले मॉलिक्यूल में गाइस, राइट, बिकॉज बोथ ग्रुप्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कैन नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, राइट. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट C इज 142. Why 1 acid gives a product C? Yes, it is possible only from one molecule. ठीक है, राइट. इसका जो पेरेंट डाइमिनोबेंजोइक एसिड होगा वो एक ही होगा, और इसका जो प्रोडक्ट है C, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं, बट हाँ लॉजिक लगा है इसमें थोड़ा. ठीक है, देन व्हाट इज ट्रू अबाउट बुना N? ब्यूटाडाइन एंड acrylonitrile. So it is obtained by copolymerization of 1,3-butadiene acrylonitrile. सिंपल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड. ठीक, एक बैलेंस है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा था, अभी क्वेश्चन जल्दी हो गया. Maltose had 2 alpha D-glucosinates linked at C1C4 as a reducing sugar. Yes, this is the structure of maltose. I hope you guys can see. Yes, C1C4 linkage है. तो this carbonyl carbon is not free, but this carbonyl carbon is free. Okay, so ये जो है maltose, it's a reducing sugar. Remember, sucrose is a non-reducing sugar. Galactose, maltose, these are reducing sugars. So maltose has C1C4 linkage between 2 alpha D-glucosinates. Perfect. It is a reducing sugar. Yes. Then of course, the other statement cannot be correct. Maltose has 2 monosaccharide alpha and beta glucose linked at C1C6. So this is incorrect. ठीक है, तो 1 is true and second is false. Alright guys, तो इसका हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया. तो माल्टोज की स्ट्रक्चर अगर पता है तो बस इतना याद रखना कि जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, व्हाट आर द मोनोमेरिक यूनिट्स एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, C1 C4 C1 C6 लाइक दैट. देन दिस सिंपल, पायर इज फॉर हीट, फायर, सो एंटीपायरेटिक हमारा फीवर रिड्यूस करेगी. एनाल्जेसिक, यू नो, पेन रिलीविंग, राइट. ट्रैंक्विलाइजर, रिड्यूसेस स्ट्रेस, इट काम्स यू डाउन, ट्रैंक्विलाइजर, राइट. तो ये हमारा ये हो गया. और एंटी एसिड, यस, एंटी एसिड रिड्यूसेस एसिडिटी. सो सिंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से. आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सिंपलर क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट. इट डजंट इवन रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, बट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आई एम श्योर एवरी पर्सन नोज व्हाट इज एंटी एसिड इज, राइट. सो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, मार्क्स फॉर फ्री. Okay, slightly qualitative analysis. Carbonate ion, remember it's a colorless gas, CO2 it gives. Okay, brisk effervescence, yes, CO2 gas with effervescence, which turns lime water milky, yes, right. Lime water milky हो जाएगा due to the precipitation of calcium carbonate. ठीक है. Sulfide ion, it gives colorless gas, yes, H2S is colorless gas on reaction with sulfuric acid, turns lead acetate paper black, yes, PB sulfide, it's a black precipitate. ठीक है. Like that you can solve and you will find that A matches with fourth, correct, B matches with first, absolutely correct, C matches with second. So sulfide, it's a reducing agent, it oxidizes to sulfate, right, it itself gets oxidized to sulfate and it यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन. तो इसका मतलब डाइक्रोमेट को +6 से +3 में रिड्यूस कर देगा. ठीक है, ये याद रखना गाइज कि डाइक्रोमेट क्रोमियम +6 ऑरेंज कलर +3 ग्रीन कलर, तो उसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. नाइट्राइट, इट गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट. ठीक है, तो ब्राउन फ्यूम्स जो है हमारा वो होगा एंड विच टर्न्स KI सोल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च ब्लू. ठीक है, तो अगेन इट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस विल रिएक्ट विद दैट. ठीक है, तो दीज आर दी reactions
Now we come at the questions, these numerical sort of questions. So yes, there is calculation. 116 gram of a substance upon dissociation yields this much hydrogen, this much oxygen, this much carbon. तो ऐसा करें, परसेंटेज हाइड्रोजन निकाल लें, ठीक है. अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा गाइस, वो आप लोग करेंगे, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100, ठीक है. एंड परसेंटेज कार्बन या तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना इनका सम, या सिंपल 48.5 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100, ठीक है. ओके, सो यू विल गेट परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन, परसेंटेज कार्बन. लेट अस कॉल देम एक्स वाई जेड, ठीक है. लेट अस कॉल देम एक्स वाई जेड, यू कैन कैलकुलेट इट, नॉट अ बिग डील. अब हम निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, दैट इज मोलर रेशियो, ठीक है. क्या निकालेंगे? मोलर रेशियो. तो कार्बन का जो परसेंटेज है दैट इज z, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे. हाइड्रोजन का परसेंटेज x है, 1 से डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास. एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज y है, इसको कर देंगे हम 16 से डिवाइड. इनको सिंपल इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेना इफ नीड बी, एंड देन यू विल फाइंड दैट, बिकॉज आई हैव डन द कैलकुलेशन, okay, just to cross check which answer should be the correct one. So the empirical formula comes out to be CH2O, right, the simplest molar ratio. Then you will find out that it agrees with this one, CH2O, and acetic acid can be written as C2H4O2, that means CH2O twice. तो ये दोनों एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे data agrees with how many molecules out of these 4? 2, right? That would be the correct answer. Consider the following sets of quantum numbers. n की वैल्यू अगर 3 है तो l always remains 1 below n, right? तो अगर n 3 है तो l होगा 0 1 2, तो this set is not possible. n 3 है, l2 possible है. ml की वैल्यू -l2 plus l, तो -2 2 plus 2, yes possible. n is 2, l is 1, possible. m is -1 2 plus 1, yes this is possible. n2, yes possible, but l2 not possible, right? For the same reason it cannot be equal, it has to be less than 1, right? So number of correct sets of quantum numbers, again it is 2. दो sets हमारे यहाँ पे correct आ रहे हैं, ठीक है. BeO reacts with HF in the presence of ammonia to give NH4 twice BeF4. Simple reaction of inorganic chemistry. It's again there in NCERT book, which on thermal decomposition produces B and ammonium fluoride. So of course that is BeF2, ठीक है, because we are preparing beryllium fluoride, right? Oxidation number of beryllium in A is of course +2. That is only oxidation number possible for beryllium. It's a group 2 element, right? 5 moles of helium gas expands isothermally and reversibly. What is the formula for the work done, guys? For isothermal reversible expansion or compression, minus 2.303 nRT log V2 by V1. So simply substitute the values. It's a very easy question. This is a very common question in thermodynamics, right? So this is 2.303, number of moles was 5, the value of R is 8.3, temperature is how much? 300, and then logarithm from 10 to 20 liter, that is log to 0.3. You substitute the value, you will find out that answer is 8630 joule, ठीक है. They are asking the magnitude, okay, otherwise it is expansion, work done will be negative, but the magnitude will be 8630 joule. Alright guys, इतना है समझ में, ठीक है. चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. A solution containing this much amount of solute dissolved in this much amount of water boils at this, ठीक है. The molar mass of the solute, again a very simple question, just little bit of calculation, right? We are talking about the boiling point, so delta TB is I KB M. ये formula होता है, no matter how difficult the question is. So elevation of boiling point is Van't Hoff factor. We are not talking about dissociation association, so Van't Hoff factor will be 1. Elevation of boiling point will be the boiling point of solution, which is 373.535 minus the boiling point of pure water, which is 373.15. Everybody knows that, right? 373.15. Now this would be equal to the product of ebullioscopic constant multiplied by molality. Kb is given to be 0.52, which we call ebullioscopic constant. Molality is moles of solute, which is 2.5 gram, I would say, right? 2.5 gram, because it's 10 to minus 3 kilogram. Molar mass, let's say M of the solute,
Mass of the solvent, it is 75 into 10 to minus 3. Okay, solve for m, you will find out the answer is 45 ग्राम पर मोल, ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, मोलर मास निकाल लेने यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करके यार, आ जाएगा तुम्हारा करेक्ट इसमें आंसर. देन द pH वैल्यू ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोल्यूशन. सो बताओगे गाइज NaOH में जो हाइड्रोक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा? इट्स 0.001, बोले तो 10⁻³ मोलर, राइट. हाइड्रोक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ मोलर. तो यहाँ से जो POH हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻³. ठीक है, इसकी वैल्यू -3 होगी. सो हमारा POH कितना हो जाएगा? 3. POH 3 हो जाएगा. अब टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, वी विल अज्यूम रूम टेम्परेचर at 298 Kelvin room temperature. Always remember, for any aqueous solution the sum of pH and POH is 14. So of course if POH is 3, pH will be 11. Clear guys? Such a simple question. Then it's a slightly controversial question. They haven't specified the reaction. Okay, so it is up to us which coefficients do we choose. So this is the reaction. If you see hydrogen on oxidation, it will give 2 electrons per mole, and silver on reduction, it will take 1 electron. So it is up to you whether you choose to write half H2 gives H plus, or you choose to write 1 H2 gives 2 H plus. Okay? That means what I am saying is, here it is not clear if we are supposed to take number of electrons 1 or 2. Okay? By the way, delta G is minus NF E naught cell. Okay? E naught cell electrode potential does not depend upon number of electrons, but Gibbs energy will depend, right? So now it's a simple affair. So minus, if I take it 1, then Faraday constant, how much is to be taken? Again not specified, 96500 multiplied by E 0.5332. So that would be joule, right? SI unit. It will come out to be 51 if you take the number of electrons to be 1. It has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 9 Kelvin, the rate constant gets doubled, right? Rate constants get doubled. Assuming the reaction to be occurring at 300 Kelvin, the value of activation energy. So remember guys, Arrhenius equation, log K2 by K1 is activation energy divided by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. रेट कांस्टेंट गेट्स डबल, तो मतलब K2 by K1 कितना हो जाएगा? 2. रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है तो रेशियो कितना हो गया? 2. log 2 कितना हो गया? 0.30 दे रखा है उसने वैसे. ठीक है, log 2 0.30. एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को निकालनी है 2.303 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 8.3. आर की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 8.3 लेनी है. ठीक है, 1 upon T1. रिएक्शन हो रही है 300 पे, तो इनिशियल टेम्परेचर 300 है और हम 9 डिग्री बढ़ा के रेट कांस्टेंट डबल कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 309. अ लिटिल बिट टीडियस कैलकुलेशन, यू कैन डू योरसेल्फ. एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सॉल्व करो इसको, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 59,000, राइट? इन इंटीजर्स वो आ जाएगा 59 किलो जूल पर मोल. ठीक है, सो सिंपल एप्लीकेशन है Arrhenius इक्वेशन का. यू विल इवन फाइंड सच एग्जाम्पल्स, ओके, in CBSE, in NCERT. I mean to say that it's not difficult, right? When you study Arrhenius equation, I am sure, I can bet you must have studied this equation, right? And it's a simple example, simple question based on that equation. The initial pressure of a gas is 0.03 atm. The mass of the gas adsorbed per gram of the adsorbent. So what they are asking basically is x by m. Mass of the gas adsorbed divided by mass of the adsorbent. So which is basically extent of adsorption. ठीक है? Is how much? Okay, Freundlich adsorption isotherm, we assume that this is physis option, right? तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा जो Freundlich adsorption isotherm है, it is x by m k p 1 by n. ठीक है, लोगरिथम लो इसका, तो ये हो जाएगा log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. तो स्लोप कितना होगा? 1 by n विच इज 1, तो मतलब ये 1 ही हो गया. ठीक है, 1 by n 1 हो तो n 1 हुआ, स्लोप 1 हुआ. इंटरसेप्ट होगा log k, इंटरसेप्ट है हमारा 0.602, दैट इज log k. ठीक है, ऑल राइट, लेट अस फाइंड आउट. log x by m is equal to log k, which is 0.602
plus slope is 1 multiplied by log p. What is the pressure? 0.03. ठीक है, so log 0.03. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली x बाई एम की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है. ठीक है, कैलकुलेशन इज लिटिल लेंदी. बाय द वे, हाउ विल यू डू इट? log 0.03 कैन बी रिटन एज 3 into 10 raised to the minus 2. ओके, एंड जब इसका log निकालोगे 10 से minus 2 का log होगा -2, एंड log 3 की वैल्यू गाइस प्लीज रिमेंबर 0.48. ठीक है, log 2357, रिमेंबर दीज वैल्यूज. Then you can calculate the logarithm of any number without even using calculator or tables. So this will be 1.52 minus, and then you can solve it and take anti-log. You will get the answer as 0.12, so which is basically 12 into 10 to minus 2 gram. ये बात है समझ में? ठीक है, इतना क्लियर हुआ. Then Carious estimation में we convert chlorine into AgCl. Okay, AgCl का मोलर मास हो जाएगा 108 plus 35 which is 143.5. ठीक है, तो कैन आई से 1 mole AgCl is equivalent to 1 mole AgCl is equivalent to 1 mole Cl, right? Why? Principle of atom conservation. Principle of atom conservation, दोनों तरफ 1 1 क्लोरीन है. इसको मास में कन्वर्ट करते हैं. 143.5 ग्राम AgCl will be formed when you have reacted 35.5 ग्राम of chlorine. Absolutely fine. ठीक है, हमारा AgCl कितना बन रहा है? 0.40 ग्राम. What I mean to say is कि जो ऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है. बस इतना याद रखना कि विच एलिमेंट इज एस्टिमेटेड एज व्हाट कंपाउंड. जैसे सल्फर इज एस्टिमेटेड एज बेरियम सल्फेट फॉर इंस्टेंस, तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो 0.4 ग्राम अगर हमारा AgCl बना है तो क्लोरीन का मास होगा 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ग्राम के Cl. ठीक है, अब इतना जो क्लोराइड है वो आपके 0.25 ग्राम कंपाउंड से आ रहा है. राइट, इज दैट क्लियर? तो जो हमारा परसेंटेज क्लोरीन है वही तो पूछा जा रहा है. राइट, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इट्स वेरी सिंपल. 35.5 into 0.4 divided by 143.5 into 0.25, right? 0.25 is the mass of the compound. ठीक है, multiplied by 100. ये कैलकुलेशन कर लेना. ठीक है, बाकी तो मोल कॉन्सेप्ट है और आंसर आ जाए आपका 40% इन नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है गाइज, तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बेस्ड ये क्वेश्चन था. So that's all for this. See how quickly we solve 30 questions. You are required to solve 25 out of them. It should take less time. So that's all in this solution, guys. Next up is your math solution of the same paper, and I'll be back soon again with the solution of the next exam of JEE from session 1. Till then, take care, guys. Stay tuned. Okay, bye bye.
ఇదే అవును, మనం అది పెట్టాలి కదా, అది మన మెయిల్లో అది ఒకసారి మెయిల్ ఓపెన్ చేయండి. మెయిల్ hello. Yeah, dear students, once again good evening. Right, in the morning we have discussed 27th dated paper shift 1 related question paper. Now let us see 27th dated shift 2 question paper. Okay, yeah, 27th dated shift 2 question paper math part let us discuss. So once again for the new learners, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. Right, you see dear student, this question, a simple question. You see the number of points of intersection of, you see, first curve and second curve. It is very clear that it is like PA is equal to some number, it represents a circle with center 4 comma 3 and radius 2. You just take x axis y axis, suppose this is 4, this is 3, 4 comma 3 is the center and radius is going to be, you see, 2. The second one represents an ellipse whose two foci are 0, 0 is one foci, 4 comma 0 is other foci, and semi-major axis 2a is equal to 6 means a is equal to 3. Midpoint of these two, 2 is the center, so you can take 3 units ellipse here. So this will be the ellipse. So because you can also check
you see this point here, since radius is 2, this point is 4 comma 1. You can substitute and verify whether this point lies interior of the ellipse or not. You can also treat z means 4 comma, you see z means 4 plus I, you can find the radius here, you can substitute, you can check mod z plus mod z minus 4 is less than 6. So, clearly this point lies interior of the ellipse, in the sense you can say that these two are going to intersect at 2 points, my dear friends. So, the answer is C option. Clear? Simple question. The next, my dear friends, second question, here you are given a determinant, say f of x, where a is some real number, then the sum of the squares of all possible values of a, some calculation is given. You see friends, you can observe that f of x is, let me take a common from the first row, you will get 1 minus 1 0 and x a minus 1, this is x square, you can say ax and a, this is the one. If you just expand this determinant, you will get a into x plus a whole square. So, you just find f dash x, my dear friends, 2a into x plus a is f dash x. Now, simple one, 2 f dash of 10 gives a number in terms of a, f dash of 5 plus 100 equal to 0 gives a quadratic equation in a. You just solve that quadratic equation, you will get a values. He is asking sum of the squares of all values, means for the quadratic equation you can apply the formula alpha square plus beta square, so that you will get the answer, my dear friends. Okay, here the answer would be 125. That is it, simple logic. So, just what you need to do is find the determinant, which will be like a into x plus a whole square, f dash x, substitute the numbers to get the condition. That is it. Then the third question, dear friends, you see for some real numbers alpha and beta, a is a complex number alpha minus I beta. Now, the system of equations, you see first equation 4i into x plus 1 plus I into y, it is a linear equation in x and y. The second equation 8 times e power I 2 pi by 3 you can write, because cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 can be written like this into x plus a bar into y equal to 0. Two linear equations in two variables, that too homogeneous, they have more than one solution, means you see they must be dependent equations. You will get like the determinant of 4i 1 plus I 8 into e power I 2 pi by 3, a bar means you can write alpha plus I beta, this det must be 0. Now, you are almost done this problem. 4i into alpha plus I beta is equal to 8 into e power I 2 pi by 3, that is cos 120 plus I sin 120 into 1 plus I should happen. Now, you just expand this, equate the real parts and imaginary parts, so that you can easily find alpha and beta value. He is asking to find alpha by beta, which you will get 2 minus root 3. That is it, simple question, right? Simplification, that is all. The next fourth question, my dear friends, here he has given AB is equal to I, det A is 1 by 8. So, from this friends, det A into det B is 1. So, det B you can say 8, that is first observation. Now, you know the formula, you see in almost many papers questions based on this is given, det of adjoint of some matrix is some, you see det of adjoint A is det A to the power of n minus 1. Here A is a 3 by 3 matrix, so n minus 1 is 2. Det AB is det B into det of adjoint 2A whole square again. Det B is 8, so I can say 8 square. Det of adjoint of some matrix is det 2A power n minus 1 is 2, so becomes 4. This is 8 square into det Ka is k power n into det A, you can write whole power 4. This is friends 2 cube power 2 means 2 power 6. This is 2 power 12 into det A power 4. Det A is already known 1 by 8, 1 by 8 power 4. You can write 2 power 18
1 by 8 power 4 is 2 cube power 4, so 2 power 12. So you will get 2 power 6 as the answer, my dear friends. That's all. Simple question. Okay. Next, my dear friends, the fourth one, you see this sequence, he has given 2 by 7 power 0 plus 6 by 7 power 1 plus 12 by 7 square plus 20 by 7 cube. Like that he has given infinite series. He is asking us to find 4s. Now, my dear friends, the first difference is it is not exact AZP. In the numbers which are in numerator, you can find the first differences are in first differences 4, 6, 8, they are in AP. So what you can do is, here for GP's common ratio is 1 by 7, multiply S with 1 by 7, so that this becomes 2 by 7, this is 6 by 7 square, this is 12 by 7 cube, and so on infinite terms. You just subtract here, friends, you will get 6 by 7 into S, which you can say this is 2 plus you can write this is 4 by 7, this is 6 by 7 square, this is I can say 8 by 7 cube, and so on infinite. Here also you can write 2 by 7 power 0, which is an AGP where AP's first term is 2, GP's first term is 1, and common difference is 2, common ratio is 1 by 7, right. So sum of infinite terms S infinity, you can say A by 1 minus R plus dr by 1 minus r whole square is the formula, which you must remember, my dear friends, which gives 6 by 7 into S is, A stands for 2 by 1 minus 1 by 7 is 6 by 7 plus dr, d is 2, r is 1 by 7 by 1 minus r whole square, which is 36 by 49. Okay. Now which is, friends, you can just find this is 6 by 7 into S, you can write 7 by 3 plus here 1 by 7 gets cancelled, so 2, this is 18, 7 by 18, which is 6 by 7, friends. So S is equal to 7 by 6 into 7 by 3 plus 7 by 18. He wants 4s, again you multiply with 4 on both sides, you will get the answer, my dear friends. The answer would be, you will get some number like 7 by 3 whole cube you will get here, right. Is this clear, dear students? So this is simply almost AGP, but how the first differences are in AP. So we know a technique to apply, we apply the technique. Next, my dear friends, here you see A1, A2, A3 and so on, A10, these are in AP. Similarly, B1, B2 and so on, B10, these are also in AP. Now he is asking us to find A1, B1 is 1 he has given, A1 is 2, my dear friends, here first term is 2, A10 is 3. You can just find like between 2 and 3, 8 arithmetic means are inserted. So common difference is B minus A by n plus 1. So common difference here is 3 minus 2 by 9, which is 1 by 9. Okay. This is for this. Since A1, B1 is 1, B1 is going to be 1 by 2 and B10 is going to be 1 by 3. Between 1 by 2 and 1 by 3, 8 arithmetic means are inserted. Here common difference is B minus A by n plus 1, which is minus 1 by 54. That is the thing. Now you can find A4 is nothing but first term 2 plus 3D, 3 by 9, and B4 is nothing but first term 1 by 2 plus 3 into minus 1 by 54, which is minus 3 by 54. Now you know A4 and B4, just multiply, you will get A4, B4 value. Okay, my dear friends. So after simplification, you will get 28 by 27 as the answer. That's it, right? Next, friends. You see this question, M, N are the number of local minima and local maxima related points for the function f of x. Here it is given by, my dear friends, integral 0 to x square t square minus 5t plus 4
by 2 plus e power t dt, right. Now what you need to do is f dash x you have to find by Leibniz formula. Dear friends, you will get x power 4 minus 5x square plus 4 by 2 plus e power x square into x square derivative is 2x. So friends, you can write here x square minus 1 into x square minus 4. So x plus 1 into x minus 1, and x square minus 4 means x plus 2 into x minus 2 into x 2 here by 2 plus e power x square. Now we need the sign of the derivative. Friend, the derivative becomes 0 at, you see, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Am I correct? Now when x is extreme right side of 2, it will be positive, negative, positive, negative, positive, negative by wavy curve method. Derivative negative to positive means local minima, here local maxima, this is minima, maxima, minima. So you see there are 3 points of minima. M is the number of local maxima. There are 2 points of local maxima and 3 points of local minima. So the answer is ordered pair 2 comma 3 is the answer, my dear friends. Okay. Clear everybody? Very simple problem. Leibniz formula application. You see this question, let f be a differentiable function open 0 to pi by 2. Yeah, this is integral. This question has controversial thing. Friends, generally if this is the thing given, if you put x is equal to 0, cos 0 is 1, integral 1 to 1 means LHS must become 0, right. Whereas RHS you put x is equal to 0, 0 plus 1, 1, not possible this is. So this is why this question is a controversial question, correction is required in this. Okay, my dear friends. Next I can go to this question, integral 0 to 1, 1 by 7 plus step of 1 by x dx. My dear friends, let me write this integral as minus integral 1 to 0, 1 by 7 power 1 by x with step dx. Now I want to write it as minus is fine, integral 1 here 1 to 1 by 2, 1 by 7 step of x dx plus integral 1 by 2 to 1 by 3, 1 by step of 1 by x step dx, like this 1 by 3 to 1 by 4, like that I want to do. So that, my dear friends, you can do like this is minus of. So minus of, you see, when x is taken between 1 to 1 by 2, 1 by x will be between 1 to 2, step is 1. So 1 by 7 integral 1 to 1 by 2 dx plus integral 1 by 2 to 1 by 3, 1 by 7 square dx, integral 1 by 3 to 1 by 4, integral 1 by 7 cube dx, my dear friends. Now what you need to do is, this becomes, friends, 1 by minus of 1 by 7 into, you see, 1 by 2 minus 1 plus 1 by 7 square into, you can write 1 by 3 minus 1 by 2, like this pattern goes. Have you seen any such pattern of this kind, my dear friends? So what I can say is, you got minus of, you see, 1 by 7 into 1 by 2 minus 1 plus 1 by 7 square into 1 by 3 minus 1 by 2, like this pattern is to be continued. Now my dear friends, you just separate here 1 by 7 into 1 by 2 plus 1 by 3 into 1 by 7 square plus 1 by 4 into 1 by 7 cube and so on. Minus of minus plus, you can write 1 by 7 into 1 plus 1 by 7 into 1 by 2 plus 1 by 7 square into 1 by 3 and so on you will get. Here you will get this expression, friends, log of 1 plus x is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus plus minus x power 4 by 4, this expansion. You see, in place of x, it perfectly takes the values, you see, x, x square, x cube kind of you will get. Similarly, log 1 minus x
will give you minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x power 4 by 4 here like this. So, friends, minus of this if you give here, exactly it shoots with logarithmic expansion. Here x acts like 1 by 7, right. You just apply the same and you have to add 1 here or x here. So, if you could add and subtract, we can convert into logarithms, so that you will get 1 plus 6 into log of 6 by 7. The point is how you convert into a known sequence is the main point. Okay, dear students. Next, you see this question, the differential equations related one, you can write, friends, here dx by dy is equal to tan inverse y by 1 plus y square minus x by 1 plus y square. Now, my dear friend, this is LDE dx by dy plus 1 by 1 plus y square into x is equal to tan inverse y by 1 plus y square. Now, it is not that difficult to solve this differential equation. This is going to be p of x. So, integrating factor is e power integral 1 by 1 plus y square. Of course, my dear friends, x into 1 by 1 plus y square dx kind of. You just see dx by dy I have written here, it is going to be tan inverse y by 1 plus y square plus x by 1 plus y square, right. So, you can also find integrating factor from which e power integral 1 by y square. So, this is nothing but e power tan inverse y, right. So, the general solution you can write x into e power tan inverse y is equal to integral of tan inverse y by 1 plus y square into e power tan inverse y dy, right. In this stage, my dear friends, you just take tan inverse y like alpha, 1 by 1 plus y square dy will become d alpha. So, the solution is going to be x into e power tan inverse y is equal to e power alpha into x integrand, e power alpha into alpha minus 1 tan inverse y minus 1 plus c will come. To find c, he has given 1 0 point, you can find c, accordingly you can find tan 1, my dear friends. So, this is a routine question. You can observe this kind of question is given in almost every paper. It is given LDE related question, where to find c he will give some point. Is it not, dear students? Next, you see this question, the equation of the parabola whose vertex is at 5, 4 and directrix is given. You see, you can find this is the directrix, suppose, of course, it is not a vertical line. So, suppose vertex is given, so let it be P, right. Now, my dear friends, directrix is given, he is asking us to find the equation of the parabola. What you can do is, you can take a line perpendicular to the directrix passing through the focus, right. For example, this is x minus 3y, substitute this point 5, 4, 5 minus 12 minus 7, that is x minus 3y plus 7 equal to 0. So, solve these two, you will get this particular point, my dear friends. Okay. Now, suppose you got this point q. Now, you can find the focus here as like p you know, q you know, p is the midpoint of qs, right. You can find the focus. Now, you know focus and directrix. Now, you can find the locus of a point x comma y such that let it be L. Yes, L is equal to LM, perpendicular distance. This is a basic standard method to find the equation of a conic, right. So, when vertex and directrix is given, first you find the axis, find the point of intersection Q, then since P is the midpoint, you know P and Q, you can find S. Now, focus and directrix is given, we just apply SP is equal to PM condition to find the equation of the parabola, right, dear students. Next, the set of all values of k for which this circle lies inside the fourth quadrant and the point 1 comma minus 1 by 3 lies inside the circle C. You see, friends, this particular k is the only unknown. You can just simplify this,
x square plus y square minus 3x plus 2y plus k by 4 equal to 0. The center is 3 by 2 comma minus 1 and radius is going to be friends root of 9 by 4 plus 1 minus k by 4. So friends, this particular circle must lie completely in fourth quadrant, means anyhow center is in fourth quadrant itself. This point is x coordinate 3 by 2, y coordinate is 1, this is smaller. So radius must be less than 1, point number 1, dear students. The next excuse me, yeah, and one more thing here, 9 by 4 plus 1 minus k by 4 must be greater than 0. This is second point. And my dear friends, after that what we can say is even this point lies inside the circle. So you can just substitute S11 less than 0, because you know you will get one more condition for k. Simply three conditions for k, my dear friends. Radius must be less than 1 and inside of the square root must be greater than 0, and third one, for this point S11 must be less than 0. If you could apply these three conditions, you take the common solution for k, that is that itself the values of k, you are going to get 9 comma 92 by 9 as the solution. Right friend, the next question, the foot of the perpendicular from the point on a line. What a routine question friends. You are given a point, you are given a line. How to find foot of the perpendicular? Take the general point on the line, 4t minus 2, 2t plus 1, 3t minus 1. So the given point is 1, 2, 4. You just take the drs of these two and the given lines drs are 4, 2, 3. You just apply dot product is equal to 0, you will get t values so that you can find the foot of the perpendicular. Once that point is obtained, can you find the perpendicular distance to this plane? Yes, obviously. Point to a plane perpendicular distance mod ax1 plus by1 plus cz1 plus d by root of a square plus b square plus c square. You just apply, you will get the distance, my dear friends. So this is a very simple and standard question. Finding the foot of the perpendicular from point to a line, then after getting from that point perpendicular distance from point to a plane, two concepts combination. Next, my dear friend, shortest distance between two lines. What an easy and problem and standard problem. You see, suppose here the point on the first line a bar I can say 3, 2, 1 and c bar you can write, or b bar you can write the drs 2, 3 minus 1. Here c bar is the second point here minus 3, 6, 5 and d bar is nothing but the drs 2, 1, 3. What is the formula for shortest distance of two lines? Box of a bar minus c bar, b bar, d bar by magnitude of b cross d. That is it. You just apply the formula, you will get the answer. Very standard and routine question, right? So, next my dear friends, a bar, b bar are the two vectors along the diagonals of a parallelogram having area 2 root 2. Suppose friend, this is a parallelogram, the diagonal vectors are nothing but these vectors are nothing but a bar, b bar. You know, area of a parallelogram when diagonal vectors are given, half magnitude a cross b gives the area, which is 2 root 2, my dear friends. So magnitude of a cross b is going to be 4 root 2, first point. Second thing, the angle between a and b is acute, that is fine. Magnitude of a is 1, he said. You see, a dot b and a cross b magnitude same means you can also find magnitude of a, magnitude of b, cos theta, sin theta are same, theta is pi by 4, angle between a and b you can say. And next my dear friends, here we want the angle between b and c, do remember. So for finding b and c, I can do b dot c, but I require magnitude of c. So this is why magnitude of c square is equal to, this is like p bar minus q bar, twice if you do dot 2 root 2 whole square into magnitude of a cross b square plus 4 magnitude of b bar square
minus 2 into dot product of these A cross B dot B bar means box ABB will become 0. So, which is friends 2 root 2 whole square is 8, A cross B magnitude square is 16 into 2 32, magnitude of B bar is already given here. So, if not you can find magnitude of B bar, because from this you can find this is magnitude of A is 1, magnitude of B bar we do not know, angle between them is sin 45, 1 by root 2 is equal to 4 root 2, which is magnitude of B bar is 8. So, you can write 4 into 64 my dear friends. So, this is also 4 into 64, which is finally going to be 16 into 32 you can say, right, because 8 into 32, 8 into 32, 16 into 32. So, magnitude of C is going to be 4 into root 2, which is 16 root 2 my dear friends. Now, after knowing that, we want the angle between B and C, right. For that you just apply dot product on both sides. So, C dot B is equal to, if you apply dot product with B it is 0 minus 2 B dot B, magnitude of B square which is 8 square. So, this is magnitude of C into magnitude of B into angle between B and C is going to be minus 2 into 64. Array magnitude of C I already got 16 root 2, magnitude of B also I got, which is 8. So, into cos alpha is equal to minus 2 into 64. Now, you can answer 16 into 4 64, these two got cancelled, cos alpha is going to be minus 1 by root 2. So, you will get 3 pi by 4 my dear friends. Okay? That is all, a simple question, right. Then next my dear friends, this is a very routine question for certain numbers. You see in 2020, 2021 papers, you can see n number of questions of this kind. Two unknowns are given, the mean is given as 6. Mean 6 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbers. So, sum must be 48, right. Already you are given 10, 16, 23, 31, 36, 36 plus x plus y is equal to this, x plus y is going to be 12, point number 1. Then second my dear friends, you can also go with 4 square plus 5 square plus 6 square plus 6 square plus 7 square plus 8 square plus x square plus y square by you are going to get 8 minus mean square is going to be variance 9 by 4. From this equation you will get x square plus y square value, here you will get xy value. From this you can find x and y, he has anyhow said x less than y, you can find x value, y value uniquely and substitute x power 4 plus y square, smaller is x, greater is y, you can find, not a big issue, that is it. Next my dear friends, the area AXY lies in the region bounded by the y axis, straight line 2, then the probability y less than 1. You see my dear friends, suppose these are the coordinate axes, this is a line whose x intercept is 6, y intercept is 3, okay. This is this line and this is the line where x intercept is 6 and y intercept is minus 5. This is the second line and y axis. This point lies in the region bounded by y axis and this. So, this is the point, this triangle is the point where this lies, but then the probability that y less than 1, y is equal to 1 is this line. So, my dear friends, you know this point is 0 comma 3, this is 0 comma minus 5, this is 6 comma 0. Area of the original triangle you can say half into base is 8 and height is 6. So, 24 is the total area and he wants y less than 1 means the probability we require this area. Rather finding this, better you find smaller area. This is y is equal to 1 means this is 0 comma 1, right. And this line is nothing but this, where if you put y is equal to 1, x is equal to 4, right.
This is the point. So, for this triangle, area is half into base into height is going to be 4, which is 4 area. So, I can say friends, out of 24 this is not our favorable area. So, 20 is feasible area, 20 by 24 is going to be the probability, my dear friends. So, you just find the areas and do, my dear friends. So, the triangle area, he wants this area. So, total triangle area minus small triangle area is the given area by total 24, that is all. Next, my dear friend, this is a very standard question. I think you know tan inverse of 1 by, you can write 1 plus n plus 1 into n, right, which you can write tan inverse of n plus 1 minus n by 1 plus n into n plus 1. It is like tan inverse x minus I by 1 plus xy. So, you can write tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. Now, if you apply sigma n is equal to 1 to 50, you will get like tan inverse 2 minus tan inverse 1 plus tan inverse 3 minus tan inverse 2 and so on. Tan inverse 51 minus tan inverse 50 you will get. See, alternately terms get cancelled like this, you will be left with tan inverse 51 minus tan inverse 1, which is tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Yeah, whereas cot of it is given, since it is positive, you can write cot inverse of 52 by 50, which is 26 by 25. Cot of cot inverse means 26 by 25 is going to be the answer, my dear friends. Okay, simple question, standard question. The next one, you see this same question is given on 24th morning paper, sin 36 degrees is given. This is the root of which equation, he said. So, friends, you just consider cos 72 degrees, you know, sin 18 root 5 minus 1 by 4. Cos 72 means 1 minus 2 sin square 36 degrees is equal to root 5 minus 1 by 4. Sin square 36 degrees is, suppose you call it as alpha, 1 minus 2 alpha square is root 5 minus 1 by 4. So, 4 minus 8 alpha square is root 5 minus 1, square on both sides, 16 plus 64 alpha power 4 minus 64 alpha square is equal to 6 minus 2 root 5. Okay, you just simplify this, my dear friends, you are going to get, so you can say that, or else rather you can say, if you simplify here, there is a chance of fractions again, 1 is there, we can simplify easily. Yeah, 1 you can bring this side. So, 5 minus 8 alpha square is equal to root 5. Now, you square 25 plus 64 alpha square minus 80 alpha square is equal to 5. Now, you simplify, my dear friends, finally you will get the answer, because 20 it is, you can cancel with 4, 16 alpha power 4 minus, you see, you will get 64 alpha power 4 minus 80 alpha square plus 20 is equal to 0. You just divide with 4, you will get 16 alpha power 4 minus 20 alpha square plus, you can say 4 plus 5 equal to 0. That is going to be your answer. That is it. Okay. Next, my dear friends, which of the following statement is a tautology? It is very simple, you can verify, you give all the 4 cases, you will observe that third option would be the answer. I do not want to waste your time, this is simple, you need to write the truth table for this, accordingly you can do. Friends, this question you just see, yeah, S is given, F is given, S is given, we need to find this. You see here, F function is very clear, F circle G is given, I want G function is not available. To find that, my dear friends, F function you just observe carefully. So, F, if you are given 1, 2, 3, 4, 5, the outputs are going to be 2, 4, 6, 8, 10,
and if you are given 6, 7, 8, 9, 10, f of 6 means 12 minus 11, 1, f of 7 is 3, this is going to be 16 minus 11, 5, this is 7, 9. So, these are the things. You just see f inverse of x, you just see f inverse of x, you see if the input is nothing but like 2, 4, 6, 8, 10, half of this is the answer. If the input is x, x by 2. If the input is odd number like 1, 3, 5, 7, 9, you can see here 2n plus 11 no is equal to x means x plus 11 by 2 you will get. You just see, suppose x is 1 is given 12 by 2 6, 1 2 6, you just give 3, 3 plus 11 14 by 2 7, like that you can see. This is f inverse of x, friends. Now f circle G is given, so you can write, you see I just want G of x, my dear friends. So what I can do is here, because finally I want these values, right. So G of x I want, so I just let me put this is G of x is nothing but, because this is the one it is given, right. So f circle G of n is given, so G of n is nothing but, you can write f inverse of n plus 1 if n is odd, and f inverse of n minus 1 if n is even. This is the thing. Now my dear friends, you can say suppose n is odd, n plus 1 is even, f inverse of even numbers x by 2 you will get, that is n plus 1 by 2 if n is odd, my dear friends. Suppose n is even, n minus 1 is odd, f inverse of odd numbers, this is the definition, that is n minus 1 plus 11 by 2, which is n plus 10 by 2. This is the definition, my dear friends. So if n is even. So once you prepare this, the problem is done. That's it. Now you can substitute these values and you will get the answer. That's it. Fine. Next, friends. You see another question, alpha beta are the roots of this quadratic equation. X square minus 4 lambda x plus 5 equal to 0 has roots alpha beta. So you can find alpha plus beta is 4 lambda, alpha beta is equal to 5. Similarly, for the second equation, the roots are, you can say alpha gamma, same alpha and gamma. So alpha plus gamma is going to be minus b by a, 3 root 2 plus 2 root 3, and alpha gamma is going to be 3 lambda root 3. Fine. Now my dear friends, if you add these two, 2 alpha plus beta plus gamma is 4 lambda plus 3 root 2 plus 2 root 3. So beta plus gamma is already given as 3 root 2. So beta plus gamma 3 root 2 can be cancelled. So alpha is 2 lambda plus root 3 alpha. In the same way, my dear friends, from this beta is nothing but 4 lambda minus this, which is 2 lambda minus root 3. But you are given alpha beta is 5. So product of these two, 4 lambda square minus 3 is equal to 5, lambda square is equal to 2. Now he is asking, so once you know lambda, lambda is plus or minus root 2. Once you know lambda, you can find alpha value, beta value. Now alpha plus 2 beta plus gamma whole square you can compute. That's it. Next, my dear friends, A is a 2 by 2 matrix whose entries are taken from 0 to 5. If the sum of all the entries of A is a prime number between 2 and 8, then the number of such matrices. What are the prime numbers between 2 and 8? It can be 3, 5, 7. Now you take a matrix like A, B, C, D. Fine. Sum of all entries should be taken from this. A plus B plus C plus D is equal to 3 possibility. See here, these must be taken, it can be given 0, 1, 1, 2 like this. So why can't you feel like number of
non-negative integral solutions of this. You may be given 0, 0, 1, 2, total must be 3. So, number of n plus r minus 1 c r minus 1, which is n is going to be 3, r is 4, 3 plus 4 7 minus 1, n plus r minus 1 c r minus 1, that is 6 c 3 is one of the possibilities. The next, a plus b plus c plus d is equal to 5, up to 5 it is possible. So, here also n plus r minus 1 c r minus 1, which is 8 c 3, my dear friends. The next, a plus b plus c plus d is equal to 7. Here also n plus r minus 1 c r minus 1. So, which is going to be you can say 10 c 3, but in this case there is a possibility like 3 boxes take 0, 1 takes 7, but 7 number is not possible, or 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0. So, we have to take out these solutions here. So, 4 should be removed and 1 6, 6 is also not there. So, 1 6 0 0 kind of 4 factorial by 2 factorial, there will be 12 such cases, 4 factorial by 2 factorial, right. So, from you take this plus this plus this and subtract these 16 classes, 16 cases, you will give the, we will get the number of 2 by 2 matrices where the sum of all elements of the matrix is going to be a prime number like 3 5 7. Okay. Next, my dear friends, the sum of the coefficients of all the positive powers of x, the binomial expansion is 939, he himself has given. Then the sum of all possible integral values of n. Here, what is the first term? You will get 7 c naught into coefficient, this is 2 power 7. Of course, x power is going to be 7 power n. 7 power n is going to be positive powers of x, he is saying, that is fine. Next, so the sum is going to be 2 power 7, which is 32, 64, 128 is here. Okay. So, first term is not sufficient. Second, 7c1 into 2 power 6 x to the power of, you will get like, so 6n minus, yeah, x to the x power n power 6 into 6n minus 5. So, here 64 into 7 you have to take 448, right. Like that you have to take the terms, you just keep on adding the coefficient, it must be 939. You will get at some stage there the x power, the next power will be here 5n minus 10, this will be 7c2 into 2 power 5, next 7c3 into 2 power 4, x power 4n minus 15. Like that you see up to which term we are going to get the sum 939. There whatever x power we are getting, suppose x power 4n minus 15, 4n minus 15 must be positive, the next one 3n minus 20 must be negative. Such a n you have to take, my dear friends. You just see up to which number you are going to get 939. So, accordingly you find the integral values of n which satisfy the inequation, and you have to find sum of all possible integral values of n, that is, okay, that is it. So, you need to write the cases and check, my dear friends. Next, you see, I can say step t denote the greatest integer function. You see, this is left hand limit at 0. So, limit x tends to 0 minus 1 plus x with modulus plus alpha power 2 step x plus, I guess, fractional part of x plus step x minus 1 by 2 step x plus fractional part of x, right. As x tends to 0 minus, x is 0 minus h kind of, 1 minus h step will be 1 itself plus alpha power 1 minus h step will be minus 2
plus h it is, plus this is minus 1 by 2 into minus 1 plus h. As h tends to 0, 1 plus alpha power minus 2 by minus 2. This is going to be alpha minus 4 by 3, my dear friends. If you equate it to alpha minus 4 by 3, you will get some quadratic equation for alpha, you can solve it. He is asking the integral value of alpha, you just solve the equation, you will get this, okay. That is it. Next, yeah, this is another equation, y of x is x power x whole power x, this is the question given. So, we need second derivative plus something. So, this is, we just take logarithmic differentiation, x into, this is x square, right, x square into log x. Now, you just take the derivative 1 by y dash is u derivative of v plus v derivative of u, my dear friends. So, n x is got cancelled. So, y dash is equal to y into x plus 2x log x. Now, again you take the, here itself you put at x is equal to 1, what is first derivative, so that here when x is 1, y is 1, 1 comma 1 is the point. If you put x is equal to 1, y is 1, y dash at 1 is also 1, my dear friends. Now, you take the second derivative in which you need f dash of 1, you substitute, you will get the answer, that is it, right. The next, my dear friends, this is a curve x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 less than or equal to 1, you know this curve, this is going to be like this, okay, in the first quadrant, and x plus y greater than or equal to 0, x plus y is equal to 0 is this line, y is equal to minus x, greater than or equal to 0 means above this, but he mentioned in first quadrant. So, the total covered area is only this area, so no way related to this line. Now, this area if you want, this is going to be, you can say it cuts at 1, 1 0 0 1 lies on this. So, integral on x axis 0 to 1, this is going to be root of 1 minus x power 2 by 3, you can write not root of, I can say, yeah, power 3 by 2 dx. You know, here you can simply, to evaluate this integral, why do not you put x is equal to sine cube theta, trigonometric substitution. So, this becomes 1, this is pi by 2, this is 1 minus cos square theta power 2 by 3 is cos cube theta into dx will become 3 sine square theta into sine theta derivative cos theta d theta, which is, friends, 3 times integral 0 to pi by 2 sine square theta cos power 4 theta d theta. Okay. Of course, sine square theta you can write 1 minus cos square theta, or Wallis formula you can apply, my dear friend. This is 3 times, what can you write? The sum of those two is going to be 6, right. 6, 4, 2 you can write, then power 2, no, 1 less than this, 4 means 3 and 1, since it is both are even, you will get pi by 2. You just simplify this, this is going to be your answer, my dear friends. Accordingly, you can find a simple question, standard question. The next, it is another differential equation like LDE itself, you can solve it. You see, dy by dx is equal to, you can say, xy by 1 minus x square plus x square plus 2 into root of 1 minus x square by 1 minus x square, right. This is, friends, I say dy by dx is equal to, so xy by 1 minus x square you can write minus of x by 1 minus x square y is equal to x square plus 2 by root of 1 minus x square. LDE, you see, integrating factor is e power integral minus x by 1 minus x square, whose derivative is 1 by 2 here. You can write e power 1 by 2 into log of 1 minus x square, which is, my dear friends, root of 1 minus x square is going to be the integrating factor. Now, y into integrating factor is equal to integral of
this q of x into root of 1 minus x square got cancelled, x square plus 2 dx, right. Now you can easily integrate. He has given the solution. You see, root of 1 minus x square into y of x, you just find y of x means you will get here x cube by 3 plus 2x by this, these two got cancelled. You see, you can write this is x cube by 3 plus 2x plus c, and he has given y of 0 is 0, in the sense you will get c is equal to 0, right. So, in this case, you see, you want integral minus 1 by 2 to 1 by 2 root of 1 minus x square into y of x is x cube by 3 plus 2x by, you can say, root of 1 minus x square dx. These two got cancelled, and this is going to be odd function. Accordingly, you can find c, accordingly you can evaluate the integral easily, right. So, my dear friends, I mean to say, yeah. So, this is simple LDE related question. He is extending the question to little extent. You see, in almost every paper related to JEE Main what we have written, we have solved so far 7 papers. In all the papers there is a question from differential equation, sometimes 2, at least 1. Even in this paper also we got 2 questions on differential equations, my dear friends. In the same way, you see this question, a circle C of radius 5 lie below x axis, okay. L1 passes through the center of the circle, okay. Suppose this is x axis, L1 passes through the center of this is line L1 which is given, center P of the circle, and intersects the line L2 at Q, and L2 touches C at the point Q. So, L2 line is also given. So, this touches the circle, it is a tangent. So, he is also given L2. If you solve L1 and L2, you got the point Q, right, fine. And the line L2, the distance of the point P from the line. So, you need to find the point P, my dear friends. Circle's radius is given 5. So, what you can do is, friends, you are given L1, L2, solve it, you will get Q, and P is a point on L1. Any point on L1 you can take, like if you take x coordinate as k, y coordinate k plus 2, you can write, yeah, you can write x coordinate is k means 3y is 2 minus 4k, you see 2 minus 4k by 3 you can take. The distance between these two is equal to 5, you apply, so that you will get quadratic equation. In k you may get 2 roots. You have to take such a way that this point lies in below x axis, means y coordinate must be negative. In such a way you have to take. Once you find that point, he wants the distance of that point to this line. Point to a line distance is not a big thing, we can easily find. Clear, friends? Simplification, that is it. The next, you see this question, probably the last question from probability. S is a sample space having 8 elementary events. P of E1 is given 1 by 36, P of E2 is 2 by 36, like that P of E8 is 8 by 36. He wants, yeah, then the number of elements in the set, A subset of S, that means subset of the sample space, P of A greater than or equal to 4 by 5. If you just count those subsets where probability is greater than 4 by 5, right, why do not you compute those subsets whose its complement, A complement, you see probability, you can see that. So, you can also collect A dash subset of S where probability of A dash is less than, you can say 1 by P of A means 1 minus P of A dash, right, less than, you can say 1 by 5, both will be the same, because rather counting that this is better. 1 by 5 you can write, since all are there 36 in the denominator, you can say 36 by 180. So, we have to take those subsets, means E1, E2 something like, where the sum of the probabilities is less than 36, its complement is going to be here.
Whenever you take such set here, its complement is going to be here. So, both will be the same in number. So, how many will be there? Since all are having 36, I have multiplied with 5, you can just treat the probabilities like 5 by 180, 10 by 180 and so on, 40 by 180 you can take. You have to take those whose sum is less than 36 by 180. That means out of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, you have to choose those combinations where the sum is less than 36. Okay. So, fundamentally empty set is in empty set means their total set, one combination, singleton 5, singleton 10, singleton 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there will be 7 such, singleton 1, empty set 1, singleton will be 7 such, and 2 combinations start with 5, 5, 10, 15 itself, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, how many? There will be 6, 2 elements plus 10 combination, 10, 15, 10, 20, 10, 25 also fine. So, 3, then 15 combination, 15, 20 is okay, 15, 25 is not okay. So, 6 plus 3 plus 1 which is 10 here. Okay friends, yeah. Next 3 combination you can take like 5, 10, 15, right. 5, 10, 15 means you will get 35. Yeah. So, that is one more combination. So, 4 combination is not possible. Altogether 10, 7, 1, 1, 19 are possible. 19 are possible where the probability is less than 4 by 5. So, their complements if you take it will be here. So, totally there will be 19 such subsets in this which contain the probability greater than or equal to 4 by 5. Right dear students, that is all about this particular question paper. Undoubtedly in this question paper one beauty is you can see all the previous papers, you can find at least 5 to 6 questions, the relevant models are reflected in this paper my dear friends. Okay. So, please I mean to say go through these questions once and get the benefit for the second session, right. That is all for the day and follows the physics class, get ready for that, right. See you.